हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, बेसिकली रिलेटेड विद द प्रोटीन बायोकेमिस्ट्री। सो इन दिस टॉपिक फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस हाउ एक्चुअली प्रोटीन फोल्ड, व्हाट इज थर्मोडायनेमिक्स बिसाइड्स प्रोटीन फोल्डिंग होती कैसे है और प्रोटीन फोल्डिंग के पीछे थर्मोडायनेमिकल क्राइटेरिया क्या है। उसके बाद हम थोड़ा प्रोटीन स्टेबिलिटी के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। तो लेट्स मूव टू द टॉपिक। सबसे पहले व्हाट वी मीन बाय अ प्रोटीन फोल्डिंग। सो इन introductory class we have already discussed that there are various hierarchical level of protein. First there is a primary structure where the important role is played by covalent bond. Then after this there is a formation of various secondary structures, and most of these secondary structures, they are stabilized by hydrogen bonds. These secondary structures further they form a super secondary structures, that is combination of more than one secondary structures. Super secondary structures they may come close to each other to form a fold. The 3D structure is referred to as domain, and finally the structure which is being formed is referred to as tertiary structure. And more than, if one tertiary structure interact with each other, then the final structure जो हम कहेंगे that would be referred to as quaternary structure. So this process which involve folding of or protein folding is that when various secondary structures overlaps on each other, it forms the tertiary structure, and this process is referred to as protein folding. So protein folding का लिटरल मीनिंग है कि कई सारे सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स का एक दूसरे के ऊपर फोल्ड होना। टर्शियरी स्ट्रक्चर या प्रोटीन फोल्डिंग के इस मैकेनिज्म तक जो मेजर रोल प्ले किया जाता है दैट इज ऑफ हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शंस। तो अगर हम ये कहें प्राइमरी स्ट्रक्चर में कोवेलेंट बॉन्ड रोल प्ले कर रहे हैं, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन बॉन्ड, तो मेजर इंटरैक्शंस जो कि प्रोटीन फोल्डिंग में रोल प्ले करते हैं, दीज आर द हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शंस। एंड बाय मल्टीपल नॉन कोवेलेंट इंटरैक्शंस, by multiple non-covalent interactions, there could be a association of various tertiary structure to give rise to a higher level structure referred to as quaternary structure. So basically protein folding means the interaction of various secondary structure with each other. In primary structure, the covalent bond, that is omega, plays an important role. In secondary structures, phi and psi values, that is bond between an NC alpha and C alpha C, plays an important role. While in case of tertiary structure, that is during protein folding, rotation around a chi, that is the rotation between a C alpha carbon and R chain, plays an important role. Okay, so in an amino acid, let's say this is some kind of peptide bond, this is alpha carbon, this is another C double bond, let's say O group, and there would be another peptide bond on this side.
this is one of the amino acid. The rotation around this is represented by phi. Rotation at this position is referred to as psi. And since R chain is also linked by a single bond, rotation around here is referred to as chi. And this peptide bond, which are planar, they are represented by a symbol omega. So coming to the protein folding. Various experimental approaches have suggested that if you carry out a denaturation of a protein in a reducing environment and allow it to renaturate by creating an oxidative environment, protein is going to always form or adopt the same conformation. It is not like that. After denaturation, the protein will renature into some other alternative conformation. The famous experiment has been done by Christian Anipson. उसने RNase A के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया. RNase A लगभग 146 अमीनो एसिड का एक एंजाइम है. RNase A के अंदर इधर की तरफ जो स्ट्रक्चर बता रखा है, दैट इज द fold structure and having a disulfide bond at least 4 different places. So 124 अमीनो एसिड लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन है, एक 3D स्ट्रक्चर में फोल्ड होता है. और फर्दर स्टेबिलिटी के लिए विद इन अ पॉलीपेप्टाइड चेन यू गेट अ 4 disulfide bond. Although there are 8 cysteine, but at certain particular places like an amino acid 40 and 95 there is a disulfide bond, amino acid 84 and 26 there is a disulfide bond. So out of 8 cysteine, 4 pair of cysteine, they are involved in a disulfide bond formation at particular locations. If you give a treatment that is a reducing environment, strong denaturing agent like beta mercaptanol etc. अगर वो आप दें, यूरिया का ट्रीटमेंट दें, तो यूरिया क्या करेगा, मल्टीपल वीक इंटरेक्शन को डिसोशिएट करेगा और बीटा मर्कैप्टानॉल डाइसल्फाइड बॉन्ड को तोड़ेगा. ऐसा करने पर अब जो प्रोटीन है वह रिड्यूस हो जाएगा, यानी डाइसल्फाइड बॉन्ड सारे सारे ब्रेक डाउन हो जाएंगे, एसएच कंडीशन आ जाएगी, एस डाइसल्फाइड बॉन्ड्स, इस तरह की कंडीशन जहां थी वहां पर अब इस तरीके की कंडीशन आ जाएगी. Protein will be denatured and it will lose its function. वह RNA को जो कट करने वाला काम है वो करना बंद कर ले. अनफिंसन ने क्या ऑब्जर्व किया कि अगर वापस रिड्यूसिंग एजेंट को हटा दो, डीनेचुरेटिंग एजेंट को हटा दो, यानी यूरिया को हटा दो, बीटा मर्कैप्टानॉल को हटा दो और वापस ऑक्सीडेटिव एनवायरनमेंट दो, आउट ऑफ मिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ पॉसिबल कन्फॉर्मेशंस, आरएनएज ए बिना किसी प्रोटीन की मदद के वापस जैसी ओरिजिनल कन्फॉर्मेशन थी उस ओरिजिनल कन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाता है एंड इट बिकम फंक्शनली एक्टिव. It becomes functionally active. That is, give an oxidizing environment, that is, carry out this reaction in presence of oxygen, having a pH around 8, which is a renaturing condition. उन्होंने एक्सपेरिमेंट को, डीनेचुरेशन रीनेचुरेशन एक्सपेरिमेंट को मल्टीपल बार किया और हर बार प्रोटीन उसी कन्फॉर्मेशन को अडॉप्ट कर रहा था और नेटिव कन्फॉर्मेशन को अडॉप्ट कर रहा था और वह अपनी एक्टिव फॉर्म में. सो
then how it is decided that how a particular protein is going to fold and how it attain again and again same kind of conformation, बार बार प्रोटीन उसी तरीके से कैसे फोल्ड होता है. सो अगर हम सिर्फ आरएनएस ए में डाइसल्फाइड बॉन्ड्स की पॉसिबल फॉर्मेशन की बात करें तो आरएनएस ए के अंदर जो 8 सिस्टीन है वहां पर 4 डबल बॉन्ड्स हमेशा स्पेसिफिक जगह पर ही बनते हैं. जैसे इस डायग्राम में कहा था हमने कि 95 वाला 40 के साथ ही बनाता, 95 वाला 26 के साथ नहीं बनाता, या 84 वाला 40 के साथ नहीं बनाता, क्योंकि 8 सिस्टीन रेसिड्यूज हो और 4 डबल बॉन्ड डाइसल्फाइड बॉन्ड फॉर्म करने हो. तो फर्स्ट जो सिस्टीन है उसको 7 और सिस्टीन के साथ डाइसल्फाइड बॉन्ड करने का मौका मिलेगा. दैट इज 1 टोटल देयर आर 7 प्रोबेबिलिटी, उनमें से 1 वुड बी द करेक्ट प्रोबेबिलिटी. एक पेयर बन गया, पीछे बच गया. अब पीछे 6 16 बचे, यानी 7 में से एक चांस है कि वो करेक्ट फोल्ड होगा. पीछे 6 बचे, 6 16 में से एक सिस्टीन बाकी के 5 सिस्टीन के साथ डाइसल्फाइड बॉन्ड बना सकता है. सो 5 में से वो किसी एक जगह पर करेक्ट बनाए, उसकी प्रोबेबिलिटी 5/1 है. 2 सिस्टीन के डाइसल्फाइड बॉन्ड बन गए. इस तरीके से हम मान लें कि अब तक हमारे 2 जगहों पर डाइसल्फाइड बॉन्ड बन गए करेक्ट जगहों पर. उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/7 इंटू 1/5. अब पीछे 4 सिस्टीन बचे हैं जिनको अभी भी डाइसल्फाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन करना है. लेट्स से कि अब और हमारे पास 4 सिस्टीन बचे हैं जिनको डाइसल्फाइड बॉन्ड का पार्ट फॉर्मेशन करना है. सपोज इस सिस्टीन की हम बात कर रहे हैं, इसके पास 3 चॉइसेस है. दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3. इसमें से करेक्ट ये इसी के साथ आकर बाइंड हो, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 3 में से 1. ये इसी के साथ डाइसल्फाइड बॉन्ड बनाए, इसकी प्रोबेबिलिटी 3 में से 1. अब 3 पेयर बन गए, 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर. अब पीछे डाइसल्फाइड बॉन्ड इन 2 के बीच में बने, उसकी प्रोबेबिलिटी 100% है, क्योंकि अब और कोई पेयर पीछे बचा नहीं. टोटल सभी चारों पोजीशन पर करेक्ट डाइसल्फाइड बॉन्ड बने, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/7 इंटू 1/5 इंटू 1/3 इंटू 1/1. एंड टोटल प्रोबेबिलिटी आपके पास कितनी आ गई? 105 में से 1. यानी प्रोटीन को डीनेचुरेट करें और वापस रीनेचुरेट करें, प्रोटीन उन्हीं 4 जगहों पर डाइसल्फाइड बॉन्ड बनाए, ऐसी संभावनाएं 105 में से 1 है. ऐसी प्रोबेबिलिटी 105 में से 1 है. पर एक्सपेरिमेंट में देखा गया है कि आप इवन 105 टाइम डीनेचुरेट करो, वापस प्रोटीन उन्हीं 105 टाइम्स 100% टाइम्स उन्हीं 4 जगहों पर डाइसल्फाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है. इट मीन्स देयर मस्ट बी सम काइंड ऑफ mechanisms which are controlling the protein folding, ताकि जो सही वाले सिस्टीन है वही एक दूसरे के आमने सामने आए और उन्हीं के बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन हो. हालांकि इन विवो कंडीशन में अगर कहीं पर गलत डाइसल्फाइड बॉन्ड बन भी जाए तो उन गलत डाइसल्फाइड बॉन्ड को हटाने का काम हम आगे देखेंगे. इट कुड बी डन by an enzyme protein disulfide isomerase. That is an enzyme referred to as protein disulfide isomerase that may assist in forming the disulfide bond at correct position. Then experimentally it was identified that protein which undergo the post translational modifications may not rapidly renaturate. ऐसे प्रोटीन्स जिनमें कुछ एक्सटेंसिव पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन हो चुके हैं, मतलब ये मान लें कि कोई प्रोटीन है और उस प्रोटीन के अंदर
कुछ पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशंस हो चुके हैं, मान लो शुगर्स एडिशन है या और कई कुछ जगहों पर डाइसल्फाइड बॉन्ड है और कुछ ग्रुप ऐड हुए हैं। ऐसे प्रोटीन को आप डीनेचुरेट करो, इट हैज डीनेचुरेट, लेट्स से दिस इज द डीनेचुरेट प्रोटीन, और उसको वापस रीनेचुरेशन कराएं आप, तो व्हाट यूल फाइंड दैट दे आर नॉट रेडिली रीनेचुरेटिंग, वह इतनी तेजी से रीनेचुरेट नहीं होते या उनका रीनेचुरेशन कंपैरेटिवली स्लो। सो कहीं पर पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन नहीं है, जैसे आरएनए में तो रैपिड रीनेचुरेशन देखने मिलता है। वन ऑफ द एग्जाम्पल यू कैन टेक दैट दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रो इंसुलिन, एंड दिस प्रो इंसुलिन जब कभी भी फोल्ड होने के बाद इसमें 3 पेप्टाइड होते हैं, 3 सीक्वेंस होते हैं, सॉरी, ए चेन, देन देयर इज अ बी चेन एंड देन देयर इज अ सी चेन, और ये बीच वाली पेप्टाइड सीक्वेंस प्रोटीन क्लीव कर यहां से हट जाती है, एंड फाइनली व्हाट हैपेंस इज दैट कि जो ये आपके पास बी चेन है और जो ए चेन है, इनको आपस में 2 जगहों पर, कम से कम 2 जगहों पर डाइसल्फाइड बॉन्ड की वजह से जोड़ दिया जाता है। कंप्लीट सी पेप्टाइड है वह रिलीज हो जाती है, सी पेप्टाइड है उसको आप कह सकते हो दैट हैज बीन एक्साइज्ड। सो दिस इज अ ए पेप्टाइड, दिस इज ए इज ऑफ 20 अमीनो एसिड एंड सी इज अराउंड 30 अमीनो एसिड्स, you can say A is around 21 amino acid and C is around 30 amino acid, and the C peptide has been released. अब इस प्रोटीन को अगर आप डीनेचर करेंगे और वापस रीनेचर कराएंगे तो वह ओरिजिनल कन्फॉर्मेशन में ओरिजिनल कन्फॉर्मेशन एडॉप्ट नहीं कर पाएगा, कारण है कि सी पेप्टाइड यहां से हट गया। तो इसमें मॉडिफिकेशन होकर बीच का सी पेप्टाइड क्योंकि रिमूव हो गया, इट माइट हैपन दैट दिस प्रोटीन मे नॉट एडॉप्ट द सेम readily, it may not adopt the same कन्फर्म। तो प्रोटीन्स जिनमें प्रोसेसिंग हो चुकी है, जिनके ऊपर कुछ तरीके पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन हो चुके हैं, वह प्रोटीन इतनी आसानी से रीनेचुरेट नहीं होते। देन व्हाट आर द इंपॉर्टेंट डिटरमाइनिंग फैक्टर फॉर अ प्रोटीन फोल्डिंग? प्रोटीन फोल्डिंग डीनेचुरेशन के बाद रीनेचुरेशन हो रहा है या नया प्रोटीन सिंथेसाइज होते ही उसमें फोल्डिंग स्टार्ट हो जाती है, तो देयर मस्ट बी सम काइंड ऑफ डिटरमिनेंट और डिसाइडिंग फैक्टर्स, सम इंपॉर्टेंट क्राइटेरियाज विच गवर्न द प्रोटीन फोल्डिंग, जो प्रोटीन फोल्डिंग को डिसाइड करते हैं। एक कॉमन ऑब्जर्वेशन कुछ इस तरीके की है कि मोस्ट ऑफन जो हेलिक्स है और शीट्स है, अल्फा हेलिक्स एंड शीट्स, they most often predominate in a protein during the folding process। कोई भी प्रोटीन जब जो प्रोटीन फोल्ड होता है उस प्रोटीन के अंदर मेनली व्हाट यू फाइंड इज डिफरेंट काइंड ऑफ हेलिक्स, एंड फ्रॉम हेलिक्स वी मीन you find various alpha helix and you find mainly beta sheets. They are more common. Why they are more common? The reason is straightforward, that they fill efficiently, and that is can come in close proximity। तो जो फोल्डेड जो प्रोटीन रैपिडली रीनेचुरेट होते हैं, ऑफन ये देखने को मिलता है दैट दे आर रिच इन अल्फा हेलिक्स, 310 हेलिक्स, some portion rarely could be in a pi helix, mainly it is a alpha helix, and then there are beta sheets, and beta sheets will be mainly it would be an anti-parallel beta sheet। और ये डोमिनेट इसलिए करते हैं क्योंकि जब कभी भी एक दूसरे पर फोल्ड करते हैं तो बीच में कोई भी जगह नहीं छोड़ते, कंप्लीट स्पेस को ये ऑक्यूपाई कर लेते हैं इस तरीके से कि बीच में वाटर के आने की भी जगह नहीं है। इवन वाटर कैन नॉट अकोमोडेट at the core of these proteins. They fill so efficiently. So helix and sheets, you will find they dominate in a folded, especially
at the core of a protein because they utilize the space efficiently, they fill the space efficiently. Another common observations from an experiment has been suggested that the amino acid which is from the internal positions play a more important role as compared to an amino acid at the terminus. That is, let's say these are some of the amino acids at terminus, and to represent this, let's say these are some amino acids at the internal position, and let's say this is some protein, and this is again C terminus. Experimentally, it was concluded that if amino acids are replaced from N terminus or C terminus of protein, that is, if you remove the amino acid from this site or from this site, the effect on protein is minimal, or you can say negligible. But if you remove some amino acids from these internal place, then there is a large effect on the protein folding. So if amino acids are substituted at internal positions, have more effect on protein folding. So these are conclusions drawn from experimental evidences. इवन एन टर्मिनस पर 8 to 9 अमीनो एसिड रिप्लेस कर दिए तो अभी प्रोटीन के ऊपर फर्क नहीं पड़ा, जबकि इंटरनल प्लेस पर 1-2 अमीनो एसिड को भी चेंज कर लें, प्रोटीन फोल्डिंग पर बहुत ज्यादा असर देखने को मिलता है. देन even it was identified that protein structures, they are hierarchically organized. Means experimental evidences suggest that first, that we have already discussed, first you will have variety of secondary structures, that is the first hierarchical level. You will have these kind of secondary structure. This could be a secondary structure, this another secondary structure, this could be a, let's say, beta sheet. These are variety of secondary structure. Next hierarchical level is formation of various super secondary structures. Also, we have named as motifs, where more than one secondary structures, they come in close proximity like this. Then there is next structure is fold, or we can say domain. Finally, there is a formation of tertiary structure.
That is, you can have these kind of structures. And finally, you form a complete folded structure, which could be somewhat like this. So this is the first stage, then the second stage. There is a hierarchical organization. It is not like that directly it forms into this structure. No, there are various intermediate stages. So fold or domain, that is, you will find a stage referred to as molten globule, and even between molten globule and a final globular protein, you can further find various folding intermediates. You can find various other folding intermediates. So secondary structure, super secondary structures, then you find a molten globule, then various folding intermediate stages, and finally you get a truss system or a folded form of protein. So protein structures, they are hierarchically organized. Then even experimental evidences suggest that protein structures are not rigid, they are highly adaptable. Protein structures are highly adaptable, they are not rigid. That is, it was identified that native fold determine the packing. फोल्ड्स हैं वो ये तय करते हैं कि पैकिंग कैसी होगी, 3D स्ट्रक्चर कैसा होगा, पर पैकिंग डजंट डिटरमाइन द नेटिव फोल्ड. In other words, what we want to say here is there are more than one way by which a protein's internal residues can pack together efficiently. So इस तरीके से लेट्स से इंटरनल पोजीशन पर एफिशिएंटली इंटरेक्शन हो रहा है. दिस मे बी वन ऑफ द वे. लेट्स से दूसरा वे इस तरीके से भी हो सकता है कि ये अल्फा हेलिक्स है और फिर दूसरा अल्फा हेलिक्स यहां पर है और तीसरा ये बीटा शीट बीच में आ गया. सो दीज मे बी टू अल्टरनेटिव. रेस्ट ऑफ द प्रोटीन में बी कंपेरेटिवली वेरी लार्ज, उसको हम यहां पर ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, बट अ प्रोटीन may fold in more than one way at internal residues. यानी इंटरनल पोजीशन से अगर कुछ सब्स्टिट्यूशन करें पर फिर भी हो सकता है प्रोटीन वापस उसी तरीके से फंक्शनल एक्टिविटी शो करे, उस तरीके का स्ट्रक्चर एडॉप्ट कर पाए. सो इन अदर वर्ड्स, डिफरेंट folds they may adapt a similar structure. They may allow it to form the same native structure. So the important point which you should note down is protein structure is not rigid, it is adaptable. यानी ऐसी बात नहीं है कि एक ही तरीके का फोल्ड हमेशा एक पर्टिकुलर तरीके की फंक्शनल पैकिंग करा सकता है. नहीं, एक से ज्यादा तरीके के फोल्ड भी एक तरीके की पैकिंग करा सकते हैं. पैकिंग को देखकर आप नेटिव फोल्ड के बारे में अंदाजा नहीं लगा सकते, बिकॉज सेम पैकिंग कुड बी अटेन्ड बाय मोर देन वन नेटिव फोल्ड. Same structure, same functional structure could be achieved by more than one way. Another experimental outcome is that secondary structures are more context dependent.
जनरली अब तक हमने पढ़ा है कि हर अमीनो एसिड मान लें कोई ए है, फिर वी है, फिर के है, एल है, आई है। अब ये किस तरीके का सेकेंडरी स्ट्रक्चर डिपेंड करेगा, वो इसकी 5 साई वैल्यू, इसकी 5 साई वैल्यू, इसकी 5 साई वैल्यू, इसकी 5 साई वैल्यू, ये इसकी 5 साई वैल्यू पर डिपेंड करता है। लेकिन एक्सपेरिमेंटली ये पता चला कि इसके आसपास किस तरीके की अमीनो एसिड है, दे आर मेजर डिसाइडिंग फैक्टर whether this sequence is going to form a beta sheet or a alpha helix structure। आस पास का पड़ोसी कौन सा है? हाँ, पर हम ये मानकर चल रहे हैं कि दिस सीक्वेंस, जो मिडिल सीक्वेंस है, इट हैज अ 5 साई वैल्यूज विच कैन फिट बोथ इन अल्फा हेलिक्स एज वेल एज बीटा शीट। ये दोनों परमिसिव वैल्यूज को एडॉप्ट कर सकता है। इस बीच की सीक्वेंस अल्फा हेलिक्स भी, बीटा शीट, पर ये फाइनली अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर में फिट होगा या बीटा शीट के अंदर। तो हम कह रहे हैं इट इज अ कंटेक्स्ट डिपेंडेंट। उसका नेबर वाले अमीनो एसिड्स की 5 साई वैल्यूज कैसे, संगत का असर है, फ्रेंडशिप का असर है, नेबर का असर है। फॉर एग्जाम्पल एक्सपेरिमेंटली अ सीक्वेंस 11 amino acid sequence AWTVEKFKLF. This sequence, when placed in between alpha helix, ओरिजिनल अल्फा हेलिक्स की सीक्वेंस को हटा दी और वहां पर इन 11 अमीनो एसिड को रखा, तो इट बिकम अ पार्ट ऑफ अल्फा हेलिक्स, वह अल्फा हेलिक्स का हिस्सा बन गए। सेम सीक्वेंस को हमने बीटा शीट्स के बीच में रखा है, या मोर एक्यूरेटली बीटा टर्न के अंदर रखा, देन इट स्टार्ट फॉर्मिंग अ बीटा शीट structure. So where you are placing this 11 amino acid sequence, what is context, what is the adjacent amino acid, they decide what kind of secondary structure it is going to form. It has ability to form both alpha helical structure or a beta turn like structure, but it depends upon the context. So that's why we say that secondary structures doesn't depend upon the sequence itself, it also depend upon the amino acids which are adjacent to it. उसके आसपास में अमीनो एसिड हैं, उनकी साई फाई वैल्यू क्या है, वो भी डिटरमाइनिंग फैक्टर की तरह काम करती है। So this experiment was done on a protein referred to as GBL protein. उसके ऊपर ये एक्सपेरिमेंटली पता किया गया। Then another experimental conclusion which was identified is that almost 50% or even more information, if it is altered, then also a protein may perform a same function and adopt a same conformation. For example, a protein referred to as repressor of primer, ROP protein, इस ROP प्रोटीन में सब्स्टिट्यूशन किया गया। यहां पर ये जो ग्रे कलर से बता रखा है, दीज आर द अमीनो एसिड विच इज कॉमन इन GBI protein and ROP protein. And these structures which is represented in, you can say, magenta color or purple color, are from a GBL protein, while the green
while the green color which is shown here is a amino acid sequence, amino acid which is variable from both proteins, and we are producing a fusion protein. Then cyan colored protein is basically showing a resemblance with ROP protein. Almost 50% change has been done in a raw protein. जो raw protein है उसमें कितना change कर लिया हमने? 50% change कर लिया, जिसमें से कुछ हिस्सा हमने कहां से लेकर आ गए? GBI से, और वो 50% से वो GBI से रिजेंबल करता है. रॉ प्रोटीन से इतना चेंज किया कि रॉ प्रोटीन से सिर्फ 41% आइडेंटिटी है. हम ये कह सकते हैं कि 9% हमने बाहर से कहीं से लेकर आ गए, 50% इसका हिस्सा है. रॉ प्रोटीन का पीछे जो हिस्सा बचा वो सिर्फ 41% है. बट स्टिल द कंफॉर्मेशन विच इज एडॉप्टेड बाय द प्रोटीन resembles the repressor of a primer or ROP protein. So this chimeric or hybrid protein is named as genus. So इस genus protein में क्या किया गया कि कंप्लीट फोल्ड ही चेंज कर दिए गए. ऑलमोस्ट 50% से ज्यादा इंफॉर्मेशन बदल दी गई, पर फिर भी प्रोटीन ROP की तरह ही फोल्ड हो रहा था और काम कर रहा था. इट मीन्स अगेन दिस एक्सपेरिमेंट शोज दैट द प्रोटीन स्ट्रक्चर इज एडेप्टेबल, इट इज नॉट रिजिड. मोर देन वन टाइप of fold they can package in a similar way and can form that functional protein. So you can write only one line that changing the fold of a protein almost around 50% may not affect the conformation of protein. As an example, chimeric protein genus, which although shows 50% identity with GBI and only 41% identity with ROP, then also resembles with ROP. Okay, so large structural changes sometimes they may be allowed. Then it is not always a case that all proteins they will always remain in a folded state. Some proteins all alone, when they are without in association of any other molecule, they may remain natively in an unfolded state. Especially these are some of proteins which are either having abundance of isoleucine or consecutive acidic amino acid or consecutive basic amino acids, जिसकी वजह से ये किसी तरीके का स्ट्रक्चर एडॉप्ट नहीं कर पाते.
लेकिन इस तरीके के नेटिवली अनफोल्डेड प्रोटीन भी हो सकता है किसी और मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्ट करे, तो ये अनफोल्डेड प्रोटीन भी फोल्ड हो सकते हैं. So it might be a case that these natively unfolded protein, if they interact with some other molecule, they can move into a folded state. For example, this is a native unfolded protein. Basically, this is a PKID, a domain of crab. So there are some proteins referred to as cyclic AMP response element binding protein. So proteins are referred to as cyclic AMP response element binding protein, which are basically a transcription factor, that is, they interact with the DNA. They have a phosphorylated kinase inducible domain. उन प्रोटीन में एक डोमेन होती है रेफर्ड टू एज phosphorylated kinase inducible domain. This phosphorylated kinase inducible domain of crab protein, the native state, it is an unfold state. लेकिन यही डोमेन अगर एक प्रोटीन के साथ क्रैब बाइंडिंग प्रोटीन, एक प्रोटीन है जिसका नाम है क्रैब बाइंडिंग प्रोटीन, तो देन सेम प्रोटीन विच वाज अनफोल्डेड, इट मूव टू अ folded state. It adopt a folded state. So some domain of a protein or a protein itself can be kept in or can be there in an unfold state in their native state. Alternatively, under certain conditions, you can find their folded state. So all proteins in their native state, they would be always in a folded state. It is not necessary. Now these were some of the experimental, we can say, conclusions or conclusions drawn on various experiments, that the changes at N-terminus or C-terminus, they have a lesser effect as compared to changes at the internal positions. The protein structure is more adaptable, it's not rigid. Some stretch of an amino acid sequence, what kind of secondary structure it will adopt, it is a context dependent, depend on the surrounding. Even sometimes if you bring a large changes even in the fold of proteins up to 50% or more, still the protein may adopt a same conformation. There are hierarchical stages in a protein folding, and some protein they can be kept in an unfold state. So these lines, they are important. Then coming to the important point, that how basically protein fold to a particular kind of native conformation, because there are large number of opportunities to get fold. प्रोटीन कई तरीके से फोल्ड हो सकता है, और फिर भी वह एक पर्टिकुलर तरीके की कंफॉर्मेशन को किस तरीके से एडॉप्ट करता है. This could be, means this paradox
or more accurately referred to as Leventhal paradox. It could be highlighted like this, यानी इसे लेवेंथल पैराडॉक्स कहा जाता है कि प्रोटीन इतनी आश्चर्यजनक घटना कैसे कर लेता है, हाउ प्रोटीन फोल्ड इनटू सच native conformation in a very short period of time. लेवेंथल ने क्या बताया कि लेट्स से if there is a protein which is composed of 100 amino acids, in 100 amino acids there would be 99 peptide bond, because if there are 2 amino acids you will get a 1 peptide bond, if there are 3 amino acids you will get 2 peptide bond, if there are 4 amino acids you will get a 3 peptide, if there are linear peptide hai. If 100 amino acids are there, then there are 99 peptide bonds. 99 peptide bond है और हर अमीनो एसिड्स की phi और psi values है. Every amino acid has a phi and psi values. So हम ये भी कह सकते हैं कि 99 पेप्टाइड्स के आसपास, 99 पेप्टाइड्स के आसपास लगभग 99 इंटू 2 दैट इज 198 साई एंड फाई वैल्यूज है. सो लीनियर चेन में एक पेप्टाइड बॉन्ड, एक साई वैल्यू और एक फाई वैल्यू, यानी अगर हम ये मान लें कि देर आर 3 डिफरेंट conformations allowed at each psi and or allowed due to, वो भी ओनली कर लें, हालांकि उससे ज्यादा, ओनली 3 कन्फर्मेशन दे अलाउड ड्यू टू साई एंड फाई वैल्यूज बिकॉज ओमेगा इज फिक्स्ड. हम ये मान लें कि जो 198 साई और फाई वैल्यूज है बीच में अमीनो एसिड्स के अंदर, हालांकि हर फाई और साई की वजह से खूब सारी कन्फर्मेशंस अडॉप्ट की जा सकती है, पर लेवेंथल ने कहा कि मान लो 3 कन्फर्मेशन ही अडॉप्ट की जाए तो भी 3⁻198 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस, पॉसिबल कन्फर्मेशंस अटेन की जा सकती है. दैट इज 2.95 इंटू 10⁻94 कन्फर्मेशंस अडॉप्ट की जा सकती है. कि अगर 99 पेप्टाइड के आसपास 198 साई फाई वैल्यूज की वजह से अगर हर एक वैल्यू से सिर्फ 3 कन्फर्मेशन भी अटेंड की जाए तो 3⁻198 डिफरेंट कन्फर्मेशंस अडॉप्ट की जाएगी. और अगर हर कन्फर्मेशन को, इतनी कन्फर्मेशंस अडॉप्ट की, और हर कन्फर्मेशंस को अगर, या हम ये मान लें कि हर कन्फर्मेशन को एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड लगता है, 1 सेकंड में 10⁻13 कन्फर्मेशन कर दी जाए, 1 सेकंड में 10⁻13, 10⁻6 मिलियन होता है, 10⁻9 बिलियन होता है, 10⁻12 ट्रिलियन होता है. तो अगर हम ये मान लें कि 1 सेकंड में 10 ट्रिलियन कन्फर्मेशन, 1 सेकंड, यू कैन सी 1 second में if 10 trillion conformations they can be adopted, although no supercomputer can process at that fast speed, but in 1 second 10 trillion different conformation can be adopted. Then also this protein which is of 100 amino acids will take approximately 13.7 billion years to get fold. और अभी तो अर्थ का ओरिजिन हुए ही 4.5 बिलियन ईयर्स हुए हैं, तो अब तक तो कोई प्रोटीन फोल्ड होना ही नहीं चाहिए.
This is called as Leventhal paradox. Means he raised a very simple question कि अगर 100 अमीनो एसिड का प्रोटीन मान लो जिसमें 19 पेप्टाइड बॉन्ड है और हर पेप्टाइड बॉन्ड तो रिजिड है, इन 19 पेप्टाइड बॉन्ड के आसपास जो भी अमीनो एसिड्स हैं उनकी कुछ पाई साई वैल्यूज होगी। सो टोटल 99 पेप्टाइड के आसपास 198 साई फाई वैल्यू हो गई। एक अमीनो एसिड की साई फाई वैल्यू की जैसे कई सारी कंफर्मेशन से अडॉप्ट की जा सकती है, बीटा शीट, अल्फा हेलिक्स, रिवर्स टर्न, 310 कॉलर, मतलब कई जगह पर फिट हो सकती है। लेकिन अगर ये मान भी लें कि हर एक साई फाई वैल्यू की वजह से सिर्फ 3 कंफर्मेशन अडॉप्ट की जा सकती है, तो अभी अगर 3 conformations they are allowed and 198 positions they are available, total number of possible combination will come out to be 3 raised to power 198, and these conformations would be very large. It would be approximately 2.95 in 10 power 94, 10 raised to power 94 बहुत बड़ी फिगर है, 10 power 15 भी नहीं, 10 power 18 भी नहीं, 10 power 20 भी नहीं, 10 power 95। और लेवेंथल ने कहा कि अगर हम ये मान भी लें कि अगर एक सेकंड में भी प्रोटीन लगभग 10 ट्रिलियन डिफरेंट कंफॉर्मेशन एडॉप्ट कर ले, इतना फास्ट, तो अभी उसको रैंडमली उस एक नेटिव कंफॉर्मेशन को एडॉप्ट करने के लिए ऑलमोस्ट अराउंड 14 बिलियन ईयर्स लगेंगे, जो कि पॉसिबल इतना टाइम तो अर्थ को बने हुए भी नहीं हुआ है। तो फिर प्रोटीन कुछ सेकंड्स में कैसे फोल्ड हो जाता है? तो लेवेंथल ने खुद ने कहा कि इट माइट बी अ केस दैट protein folding instead of being a random process कि पहले ऐसा फोल्ड होकर देखें, फिर वैसा फोल्ड होकर देखें, फिर थर्ड तरीके का फोल्ड, फिर फोर्थ तरीके का फोल्ड होकर देखें और परमुटेशन कॉम्बिनेशन करके फिर फाइनली एक पर्टिकुलर तरीके का स्ट्रक्चर अडॉप्ट करें, उसकी बजाय इट मस्ट बी अ सीक्वेंशियल प्रोसेस that start with a formation of or that start with कि कुछ सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स एक दूसरे के पास में आए, दैट इज रेफर टू एज न्यूक्लिएशन इवेंट, एंड orderly it progresses toward the hierarchical structure. It may be a step by step कि first step is like this, then there must be second step, then so that in first step large number of conformations कि या तो ए तरीके का या बी तरीके का या सी तरीके, इनमें से कोई एक स्टेप, अगर ए स्टेप ले रहे हैं तो बी और सी से जो ट्रिलियंस ऑफ कंफर्मेशंस दे कैन नॉट बी अडॉप्टेड, इट शुड बी अ सम काइंड ऑफ सीक्वेंशियल प्रोसेस. So what he suggested that it is a sequential process which starts with a nucleation, and this nucleation event guides the process rapidly. So it is not like a funnel process or it's not like a Colloq process. That was suggestion given by Leventhal. So Leventhal suggested that you can write down. Leventhal suggested that protein must fold in some sort of ordered pathways or set of pathways in which the approach to the native state is accompanied by sharply increasing conformation stability, that is decreasing free energy. So say note down kar, this is very important conclusion drawn by Leventhal. Directly question may be asked like this, that what was the conclusion of Leventhal. So instead of protein folding, a funnel like process, which we will study later on, that what we mean by funnel like process, he believes that a process is a sequential process. It is an ordered pathway which finally attains a native state. Protein adopt that particular conformation which is most stable or which is with the least free energy.
So this was the Levinthal's paradox. Then moving further, so what Leventhal suggested is that there is, for some secondary structures, they come near to each other. There is a nucleation step. So there is a primary structure, there is a nucleation step, this is the first nucleation step. Then there is this nucleation step, it guides further structure, that is there is a nuclear expansion, and finally there is a protein, folded protein in a short period of time. So here even you can see it in this animation as well. Initially there is a rapid nucleation step, and then which is guiding the rest of hierarchical level of structure. First, there is a, from primary structure, there is a hydrophobic residues, they form a nucleus, then there is a nuclear expansion, and finally you get a folded form of protein. There are various techniques which are utilized for assessing the protein folding process. We will study these techniques in detail when we will take a unit 13, that is methods in biology. But important techniques you can note down here. One technique which can be utilized for specifically secondary structure determination is circular dichroism spectroscopy, mainly utilized for secondary structure determination. That is circular dichroism spectroscopy. Secondary structures and tertiary structures, they can be identified by a technique referred to as 2D nuclear magnetic resonance spectroscopy, an approach which is often referred to as pulsed hydrogen deuterium exchange. As we were saying that in a helix there is a slow exchange, hydrogen to deuterium, this is a slow exchange, while in sheets there is almost 50% exchange. That is mainly the hydrogen is exchanged by amide hydrogen, and if amide hydrogen is involved in hydrogen bonding, as is in case of alpha helix, the exchange is very slow. But in case of beta sheets, NH ग्रुप का हाइड्रोजन 50% जगहों पर ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होता है, इसलिए वहां पर 50% तक एक्सचेंज किया जा सकता है. So you can use circular dichroism, you can use a pulse field hydrogen deuterium exchange. Another technique which could be utilized for monitoring protein folding is fluorescence resonance energy transfer, referred to as FRET. So this could be utilized for protein folding. Protein folding के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, और इवन दिस कुड आल्सो बी यूटिलाइज्ड फॉर इन्वेस्टिगेशन ऑफ वैरायटी ऑफ प्रोटीन इंटरेक्शंस. इन दोनों अप्रोचेस पर्पस के लिए फ्रेट का इस्तेमाल किया जा सकता है. तो 3 मेजर टेक्निक्स जो इस्तेमाल होती है, दैट इज सर्कुलर डाइक्रोइज्म, हाइड्रोजन ड्यूटेरियम बेस्ड
2D NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी और इवन मास स्पेक्ट्रोमेट्री, क्योंकि हाइड्रोजन ड्यूटेरियम चेंज होने पर NMR सिग्नल्स में भी चेंज आता है और मास में भी चेंज आता है। NMR में इसलिए चेंज आता है क्योंकि ड्यूटेरियम है वो मैग्नेटिक नहीं है। मास में इसलिए चेंज आता है क्योंकि हाइड्रोजन 1 डाल्टन होता है जबकि ड्यूटेरियम 2 डाल्टन। So these are some of the tactics, monitoring tactics which are being used. Now various models has been proposed to explain the protein folding, but most accepted models suggest that the earliest protein folding event, which could also be referred to as nucleation step, that is an earliest folding event, are initiated by hydrophobic collapse. Any major driving force is the hydrophobicity. So this is an unfolded protein and you can see that it is folding in a fashion, means it is collapsing. Various amino acids, they are coming close together in a fashion that most of the white dots, which are non-polar amino acids, they could move to the center, while the red one and the blue one, they may come at the periphery, while white one, they come to the center. This is called as hydrophobic collapse. So unfolded protein, it collapses somewhat like this, such that at the core, it collapses somewhat like this, that at periphery you are having a, at periphery, everywhere at periphery, and let's say this is the core. During hydrophobic collapse at the periphery, you will find a polar amino acids, R chain of polar amino acids, while at the core mainly you will find a non-polar amino acids. That is, globular proteins, they fold into fashion that they have a compact hydrophobic core. And this hydrophobic collapse is a major driving force for protein folding. Collapse is somewhat like that, all water which has been sent, it has been expelled outside. अब अंदर की तरफ बिल्कुल वाटर नहीं होगा, वाटर हमेशा कहां पर होगा, इस प्रोटीन के सराउंडिंग. So according to this model, in simple words, protein folding is hydrophobic driver. During the nucleation step, all those amino acids which are having an non-polar R chain exposed in contact of water, they are forced to move toward the core of protein. This is referred to as hydrophobic collapse. जब प्रोटीन कई सारे सेकेंडरी स्ट्रक्चर से और आर चेन नॉन पोलर वाली वाटर के कांटेक्ट में है, वाटर नॉन पोलर आर चेन को कुछ इस तरीके से दूर करता है कि सारी नॉन पोलर आर चेन वाले अमीनो एसिड्स प्रोटीन के कोर में चले जाते हैं और पेरिफेरी पर सिर्फ पोलर अमीनो एसिड्स रह पाते. इतनी कॉम्पैक्ट पैकिंग होती है इस हाइड्रोफोबिक ड्राइविंग प्रोसेस से कि अंदर कोर से सारा वाटर हट जाता है और सारा वाटर कहां पर रहता है, पेरिफेरी. सो दिस न्यूक्लिएशन स्टेप इज वेरी रैपिड. लेकिन बाद के जो प्रोसेस है, फर्दर जो थोड़े बहुत चेंजेस प्रोटीन फोल्डिंग में हो रहे हैं, दे मे टेक और दे मे कंज्यूम्स लिटिल बिट
सो इनिशियल जो कोलैप्स स्टेज आएगी, फाइनली जो इनिशियल कोलैप्स स्टेज आई, इसके अंदर जो फोल्ड होकर एक इनिशियल कोलैप्स स्टेज, फाइनली जैसे ही आप देखेंगे यहां पर कुछ इस तरीके से कोलैप्स स्टेज, ये फोल्ड होता रहा, फोल्ड होता रहा इस तरीके से, और अब ये जो स्टेज आई, फॉर दिस वी यूज अ टर्म मोल्टन ग्लोब्यूल. सो द इनिशियल कोलैप्स स्टेज of a protein is referred to as molten globule. Even the experimentally it has been proven that this hydrophobic collapse occurs within a fraction of second. There is one fluorescent dye referred to as ANS. It is a fluorescent dye. ANS is a hydrophobic dye और ये फ्लोरोसेट तब करती है जब इसके सराउंडिंग में वाटर ना हो, नॉन पोलर एनवायरमेंट हो, हाइड्रोफोबिक कोर हो, तो फ्लोरोसेंस एनहेंसमेंट देखने को मिलता है. सो कोई अनफोल्डेड प्रोटीन है, एक सॉल्यूशन में रखो, साथ में एएनएस को रखो. प्रोटीन को जैसे ही डालेंगे, जब तक प्रोटीन नहीं डाला तब तक एएनएस जो वाटर में है वो कोई फ्लोरोसेंस एमिशन नहीं कर रहा है. और जैसे ही प्रोटीन डाला, प्रोटीन अगर रेडिली फोल्ड होता है कुछ इस तरीके से कि कोर की तरफ नॉन पोलर होगा, पेरिफेरी की तरफ पोलर रेसिड्यूज होंगे, तो नॉन पोलर एनवायरमेंट में अगर एएनएस पहुंच जाता है या एएनएस जाएगा तो फ्लोरोसेंस एमिशन होना चाहिए या एनहेंसमेंट होना चाहिए, और ऐसा देखने को मिलता है. So once a protein get fold, there would be a hydrophobic core, and if there is a hydrophobic core, ANS will able to get a non-polar environment, and if an ANS it get a non-polar environment, there is an enhancement in a fluorescence. Fluorescence में enhancement देखने को मिलता है. So folding protein जहां या प्रोटीन फोल्डिंग जिस सॉल्यूशन में हो रही है वहां पर एएनएस भी है, तो आपको फ्लोरोसेंस एनहेंसमेंट देखने को मिलता है, विच सजेस्ट दैट कि हाइड्रोफोबिक कोलैप्स हो रहा है, कोर कोई नॉन पोलर है, और बाहर की तरफ जो भी लूप्स या हेलिक्स पेरिफेरी की तरफ है, दे पोलर रेसिड्यूज दे आर इन कॉन्टेक्ट ऑफ अ वाटर, व्हाइल नॉन पोलर रीजन दैट इज टुवर्ड द कोर. देन एक बार हाइड्रोफोबिक कोलैप्स हुआ, उसके बाद फर्दर कई सारे इंटरमीडिएट फोल्डिंग इवेंट्स हो सकते हैं. दे मे टेक लिटिल बिट लॉन्गर टाइम, फ्रॉम 5 to even 1000 millisecond, or you can say from 5 millisecond to almost around 1 second. Okay, so it may take from 5 millisecond to even 1 second. Rest of the process, the immediate process, the first step, the initiation step, nucleation step is very fast, which occur in first 5 milliseconds, and the final folding events where the protein is adopting a globular state may take some extra fraction of seconds, let's say up to 7 to 8 seconds. Finally a protein means protein folding is not taking billions of years, around 10 seconds a protein will get folded. The first step takes a fraction of time, that is only lesser than 5 milliseconds, that is the nucleation step. Coming to the thermodynamics of a protein folding. Let's say this is some protein which is in unfolded state. Let's say this is a protein in unfolded state. We are using a term UF. The same protein may move to this state. For this we can use a folded state. Let's say this is the folded state. We are using term fold.
obviously there would be some free energy of an unfold state referred to as Gibbs free energy of unfold state, and there would be some Gibbs free energy of fold state. And during this process, what would the change in delta G that could also be calculated? That would be a G of a final state, that is folded, minus G of an unfold state. And this could be easily calculated if you know that delta G0, if you are talking about incident conditions, then delta G0 would be equivalent to minus RT log K equilibrium, or more accurately delta G0 would be equivalent to, so this is, we are talking about delta G0, so delta G0 would be equivalent to minus 2.303 RT log K. So if K equilibrium is given, you can calculate the change in a free energy. So let's say if there is a question that there is a protein which moves from an unfold state to a fold state, and the value of K equilibrium is, let's say, 10 raised to minus 4, or let's say 10 raised to power minus 5, then what would be the value of delta G0 in kilojoule per mole? कैलकुलेट कर बताएं. During protein folding, the value of K equilibrium is 10 raised to minus 5, and delta G0, then what would be the delta G0 under standard conditions? कैलकुलेट कर बताएं. फॉर्मूला बहुत सिंपल सा है, ट्राई करें. सो कैसे कैसे कैलकुलेशन करेंगे? बहुत सिंपल सा था ये, तो इतना टाइम नहीं लगना चाहिए आपको. दैट delta G0 would be equivalent to, formula you will use minus 5.7 log of 10 raised to minus 5, क्योंकि you have to calculate your answer in kilojoule per mole, so that would be minus 5.7 log of 10 raised to minus 5 is minus 5, and finally value will be 5 into 5 is 25 plus 20, approximately 28.5, and value would be plus. But actually the K equilibrium value is 10 to the power 5. I am changing little bit question. So value of 10 to minus 5, we are putting a 10 to the power 5. So if it is 10 to the power 5, then answer would be minus, and if value is minus, we will say that protein folding is a spontaneous process. Protein folding have a spontaneous process है. So if the value of K equilibrium is 10 to the power plus 5, this is the K equilibrium. Under such scenario, the free energy change would be minus 28.5 kilojoule per mole. It would be kilojoule per mole. Or we know that free energy change could also be calculated from Gibbs-Helmholtz equation, and Gibbs-Helmholtz equation is delta G is equal to delta H minus T delta, where delta H is an enthalpy
change in enthalpy, delta S is the change in entropy. Enthalpy change could be calculated by an enthalpy of a native state. So for folded state, we can also use the term native state. If we are using N, then the equation would be, it could be somewhat like this. So for a fold state, we are using term native state. So it would be an enthalpy of native state minus an unfold state, entropy of native state minus the entropy of unfold state. T is the temperature in Kelvin where this protein folding is allowed to happen. So let's say अगर आपको कहा कि temperature is, let's say temperature is given to you as 27 degrees centigrade, change in enthalpy is suppose given to you is, let's say 10 kilocalorie, change in the entropy is, let's say given to you is, and changes, let's say minus this, the entropy changes, let's say minus 20 kilo or simply 20 calorie per degree Kelvin, whatever the unit you are using. And then what would be the change in free energy? Enthalpy में भी negative change है, entropy में भी negative change है, free और reaction 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर हो रही है, तो फ्री एनर्जी चेंज कितना होगा? टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब है दैट वी आर टॉकिंग अबाउट 27 degree centigrade means you add a 273 to this, you will get 300 Kelvin. Calculate the delta G. इसको भी आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं. So these are questions, thermodynamical questions, numerical questions which could be come from protein folding. Either K equilibrium would be given and free energy change would be asked, या एंथैल्पी एंट्रोपी टेम्परेचर चेंजेस दे रखे होंगे एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, डेल्टा जी पूछी जा सकती है. तो बहुत सिंपल सा है. आपको इक्वेशन क्या इस्तेमाल करनी है? यू हैव टू इक्वेशन दैट डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस. ध्यान रखें कि यहाँ पर ये किलो कैलोरीज में, इसको कैलोरीज में कन्वर्ट करना जरूरी है. माइनस 10,000 कैलोरी लिखना जरूरी है, बिकॉज ये कैलोरी में, तो दिस शुड ऑल्सो बी न कैलोरी. और आज वैल्यू हो जाएगी एंथैल्पी में चेंज माइनस 10,000, टेम्परेचर 300, एंट्रोपी में चेंज माइनस 20. सो माइनस 10,000 माइनस 6,000 माइनस 10,000 माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस 6,000. फाइनली विल गेट माइनस 4,000 calorie per mole. And if the value comes out to be minus negative, then you will say that the process is thermodynamically favorable. So at temperature 27 degrees centigrade, if these are the value of enthalpy, these are the value of entropy, then you will say that process is thermodynamically favorable. So you can calculate the delta G from an enthalpy entropy, or you can calculate the delta G from a K equilibrium. Then moving further, generally the majority of proteins, they denatures on increasing the temperature, but there are some proteins which are referred to as cold denatured proteins. In cold denaturation proteins, if you decrease the temperature, it will destabilize the structure. अगर टेम्परेचर ऑफ 4 डिग्री सेंटीग्रेड से लोअर, 4
से लोअर 0 या -10 या -20 करते हैं तो प्रोटीन स्ट्रक्चर लॉस होता है. बेसिकली these cold denatured proteins are those where hydrophobic interactions is major stabilizing force for 3D structure of protein. जहां पर बहुत ज्यादा रोल हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन रोल प्ले करता है, such proteins are referred as cold denatured protein. For cold denatured protein, what you find is that during protein folding, that is unfold state से protein जब native state में जाता है, native means folded state में जाता है, तो उस दौरान change in enthalpy comes out to be positive, change in entropy also come out to be positive. और अगर आप प्रोटीन को फोल्ड करना है तो डेल्टा जी को नेगेटिव करना पड़ेगा, और डेल्टा जी नेगेटिव तभी होगा when temperature is greater than the ratio of enthalpy by entropy, that what we have studied in the thermodynamics. So these cold labile protein, they will renaturate, will be able to maintain their structure at the temperature higher than the ratio of enthalpy by entropy. But most of the proteins, they are heat denatured proteins where the important role is played by electrostatic interactions, electrostatic, van der Waal, etc. Van der Waal, hydrogen bonds, etc. They play an important role. ऐसे प्रोटीन में इंक्रीज इन टेम्परेचर इज डीस्टेबलाइजिंग, हायर टेम्परेचर करेंगे तो प्रोटीन डीनेचर होंगे. In these proteins, that is when a unfolded state protein move to a native state, उस दौरान एंथैल्पी में चेंज नेगेटिव आता है, एंट्रोपी में भी चेंज नेगेटिव आता है. अगर फिर आपको डेल्टा जी को नेगेटिव लेकर आना है, देन टेम्परेचर मस्ट बी लेसर देन द रेशियो ऑफ एंथैल्पी बाय एंट्रोपी. If you need a delta G to be negative, then temperature should be lesser than enthalpy by entropy. That is, heat denatured proteins, they can be kept in their fold state only at a lower temperature, while cold denatured proteins, they are kept in their native fold state at comparatively higher temperature. Then the present concept for the protein folding is not explained by hydrophobic collapse, it is explained by landscape theory. According to landscape theory, you can imagine that an unfolded protein is like a flat ground, and in this flat ground, in between somewhere, it has negligible slope, and in between there is a hole. As an example, you can assume that there is a complete golf course, golf का एक मैदान है जो इस तरह से फनल की तरह या इस बाउल की तरह है, और उसके सेंटर के अंदर एक होल है जहां पर गोल्फ बॉल जाकर फिट होनी. आप किसी भी बॉल को उस ग्राउंड में छोड़ेंगे, स्लोली ग्रेजुअली वह मूव करते हुए फाइनली इट मे मूव टू दैट पर्टिकुलर होल. पर उससे पहले, इस एक्चुअल होल में जाने से पहले, ये कई और स्टेजेस को एडॉप्ट कर सकता है. पर ये बाकी किसी स्टेज को एडॉप्ट करे तो वो क्योंकि ज्यादा थर्मोडायनेमिकली फेवरेबल नहीं होती, finally it attain that particular state which is thermodynamically most favorable, and that thermodynamically most favorable is the which is at the lowest energy state, which is at the lowest gives free energy. या ग्राउंड के अंदर जो lowest point था, finally बॉल उस जगह पर जाकर स्टेटिक होगी. सो अकॉर्डिंग टू दिस कि बॉल यहां से यहां पर अटक गई, फिर यहां से कंफर्मेशन एडजस्टमेंट किया कि ये सही नहीं है, थोड़ा और नीचे गई और थोड़ा कंफर्मेशन एडजस्ट होकर वो एनर्जी फ्लो फनल के अंदर सबसे बॉटम पर पहुंची. दैट इज मूविंग फ्रॉम अ हाई एनर्जी, हाई गिव्स एनर्जी, फाइनली इट इज अटेनिंग टू दैट स्टेट
which is having a lowest free energy. ऑब्वियसली जब कभी हाई एनर्जी से लो एनर्जी की तरफ जाओगे तो चेंज डेल्टा जी में कैसा आएगा, नेगेटिव. एंड ऑब्वियसली नेगेटिव आना ही चाहिए, प्रोसेस को अगर थर्मोडायनेमिकली फेवरेबल कराना है तो चेंज इन डेल्टा जी मस्ट कम आउट टू बी नेगेटिव. सो इन अदर वर्ड्स, out of multiple attainable delta g it is going to adopt, यानी या इस वैल्यू को भी अडॉप्ट करता तो ये वैल्यू मान लें यहां पर एनर्जी एक 10 है, इस वैल्यू को अडॉप्ट करता, फ्री एनर्जी की वैल्यू 8 है, यहां पर फ्री एनर्जी की वैल्यू 6 है और यहां पर फ्री एनर्जी की वैल्यू लेट्स से 4 है. 10 to 8 में भी चेंज -2 का है, 10 to 6 में चेंज -4 का है, 10 to 4 के अंदर चेंज -6 के अंदर है. ये उस वैल्यू को अडॉप्ट करेगा जहां पर डेल्टा जी में सबसे ज्यादा चेंज आए, या फाइनली प्रोटीन उस फॉर्म को अडॉप्ट करेगा विच इज ऑफ लीस्ट एनर्जेटिक स्टेट. यानी प्रोटीन स्टार्ट विथ अ अनफोल्ड स्टेट, मींस स्टार्ट्स विथ अ वेरी हाई एंट्रोपी स्टेट and ends with a lowest entropy state. That is, in other words, change in entropy is also negative. Free energy में change negative है, entropy में भी change negative. और इस दौरान प्रोटीन आप देख सकते हैं, अनफोल्डेड प्रोटीन कई सारी कन्फॉर्मेशनल एडजस्टमेंट करता है, इधर नहीं, ये वाला नहीं, ये वाला सही है, ये वाला नहीं, ये वाला सही है, और फाइनली उस स्टेट को एडॉप्ट करता है जो जिसके अंदर मिनिमम फ्री एनर्जी और मिनिमम एंट्रोपी, विच सो दैट इट कैन रिड्यूस इट्स फ्री एनर्जी एंड एंट्रोपी. और ये तब तक ऐसा करता रहता है जब तक कि ये नेटिव स्टेट को अटेन ना कर ले. तो स्टार्ट्स विद अ हाई एंट्रोपी स्टेट, मे एडॉप्ट अ सम इंटरमीडिएट स्टेजेस लाइक अ मोल्टन ग्लोब्यूल, और मोल्टन ग्लोब्यूल से भी काम नहीं बना, means it may adopt some intermediate stages like molten globule, और थोड़ा सा वह कंफॉर्मेशन एडजस्टमेंट करता है और molten globule से आगे जाकर वह हो सकता है कई सारी इंटरमीडिएट स्टेजेस को अडॉप्ट कर सकता है, और इंटरमीडिएट स्टेजेस के बाद फाइनली इट इज गोइंग टू फॉर्म अडॉप्ट अ नेटिव स्टेट. सो अकॉर्डिंग टू this landscape theory of this landscape, and a protein has to move to that particular value which is with a minimum entropy and minimum free energy. So polypeptide folds via series of conformation adjustment that reduce their free energy and entropy, and this reduction keep on going until a native state is adopted. So these are proteins folding, and the free energy of these different state, it is shown by this particular ball. You can see that this ball is moving like this. So on this side there is a protein folding, and this side this ball is moving at different energy level. Now it is again it is moving to this side. Finally, when it moves to this side, a protein fold into a final structure. This is landscape theory model for protein folding. So there are two we can say competitive model, competing model. One is landscape theory and another model is the hydrophobic collapse. Then according to this landscape theory model, during this overall process, the change in enthalpy comes out to be negative, change in entropy comes out to be negative, delta G comes out to be negative, but the maximum contribution, or we can say single largest contribution to the stability of folded protein is due to the change in the entropy of solvent for the non-polar residues.
अगर प्रोटीन अनफोल्ड स्टेट में है, अगर प्रोटीन अनफोल्ड स्टेट में है, these are the changes in the protein. प्रोटीन के अंदर कई ये डिफरेंट आर चेन्स हैं. There may be various R chain, they could be non-polar. These are various non-polar R chain. रेड कलर से हमने जो ड्रॉ कर रखे हैं, these are non-polar R chain. While जो ब्लू कलर से हमने यहाँ पर ड्रॉ कर रखी है, these are polar R chain. These are the polar R chain. Let's say these are polar R chain. And in surrounding to this is a water molecule. So let's say this is the water molecule in surrounding to this solvent. So this is the solvent. So solvent in this case, it is basically water. So when a protein is unfold state, various non-polar R chain, they are in contact of water, due to which the entropy of water decreases, which is thermodynamically not favorable, as we have studied when we were talking about a hydrophobic interactions. Protein, to increase its entropy back, प्रोटीन अपनी एंट्रोपी को वापस बढ़ाने के लिए, what it do is that वाटर अपनी एंट्रोपी को वापस इंक्रीज करने के लिए प्रोटीन को इस तरीके से फोल्ड करता है कि सारे के सारे नॉन पोलर चेन्स वाटर से दूर हो जाए. जितने भी नॉन पोलर आर चेन्स हैं, दे ऑल शुड मूव अवे फ्रॉम वाटर, जबकि जितने भी पोलर चेन्स हैं, दे विल कम इन कांटेक्ट ऑफ वाटर. कुछ इस तरीके से प्रोटीन फोल्ड होता है कि वाटर के कांटेक्ट में मेनली यू विल फाइंड अ पोलर आर चेन्स. ऑल नॉन पोलर आर चेन्स दे मूव to the core, they move to the core. These are non-polar R chain, they move to the core. ऐसा करने पर प्रोटीन की एंट्रोपी तो घट रही है, लेकिन सॉल्वेंट की एंट्रोपी, वाटर की एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है. एंड दैट्स व्हाई वी से दैट इंक्रीज इन एंट्रोपी ऑफ सॉल्वेंट for the non-polar residues, that is the major, or we can say largest contributor during this protein folding process. So as already mentioned, according to energy funnel model, protein start with a unfold state and finally it adopt a native state, that is a fold state. During this, it may first adopt a molten globule state, then various discrete folding intermediates, it has been drawn that this is the unfold state, this is the molten globule, then there are various discrete folded folding intermediates, and finally there is a native folded protein. During this process, what happens is that we start with a maximum entropy, highest entropy, and finally reaches to a minimum entropy.
You starts with a very high free energy and ends up with a lowest free energy. That is, the change in delta G comes out to be negative, change in an entropy comes out to be negative. Different states, this state could be adopted, this state could be adopted, this could be state, this could be adopted, means the protein carries out various conformation adjustment and finally it attains that particular state which is with the lowest free energy. So this is landscape model for protein folding और एनर्जी फनल मॉडल को डॉल, इसको एनर्जी फनल मॉडल भी कहा जा सकता है. So this was the thermodynamics behind या besides protein folding. Although no one dictate a protein that how to fold, that is whatever we have studied up to now, on basis of this we can say that first there is a primary structure. Primary structure is basically a sequence of some amino acids like alanine, valine, leucine, isoleucine, glutamine, proline, alanine, aspartic acid and so on. So primary structure sequence determines final 3D structure of protein. The information for protein folding resides in a sequence of protein. Because every amino acids will have a psi and phi values, and on basis of the psi and phi values, our secondary structures would be adopted. Secondary structure depends on psi and phi values. Every amino acid has some permissive psi and phi values. Then tertiary structure is mainly hydrophobic driven, and major role here is played by R chains of amino acids. So on adopting some particular type of secondary structures, R chain, they would be exposed in contact with water, and water will never allow non-polar R chains to come in contact, so it will fold the protein. So in short, we can say the sequence of an amino acid, that is primary structure of a protein, is dictating a final structure. और more accurately, थोड़ा और पीछे जाए तो हम कह सकते हैं the information in a gene not only code for a protein, it also has a information how a protein is going to fold. जीन की जो सीक्वेंस है उससे आप mRNA की सीक्वेंस प्रेडिक्ट कर सकते हैं. mRNA के कोडॉन के बेसिस पर प्रोटीन की सीक्वेंस प्रेडिक्ट की जा सकती है. प्रोटीन की सीक्वेंस के बेसिस पर साई और फाई वैल्यूज आप असेस कर सकते हैं. साई फाई वैल्यू के बेसिस पर सेकेंडरी स्ट्रक्चर पता कर सकते हैं. सेकेंडरी स्ट्रक्चर में कौन सी नॉन पोलर आर चेन बाहर की तरफ एक्सपोज है, कौन सी अंदर की तरफ जानी चाहिए, उसके बेसिस पर मॉडलिंग कर आप उसका फाइनल स्ट्रक्चर 3D स्ट्रक्चर भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं. ओके, नाउ दिस कंप्लीट प्रोसेस इज इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस, बट इन विवो कंडीशंस में there may be some proteins which assist protein folding, जो protein folding में मदद कर सकते हैं. So now moving to some folding accessory proteins. So we are saying that folding accessory proteins, they are not essential, but if they are present, protein folding is fast and
chances of error is less. They also enhance protein stability. So these assist the protein in folding. Some of the important folding accessory proteins are protein disulfide isomerase. In eukaryotic system, this protein disulfide isomerase is mainly present in rough endoplasmic reticulum. जब कभी भी कोई सिक्रेटरी प्रोटीन is synthesized by the ribosome which is bound to rough ER. So this is the RER membrane. Protein enters into the ER lumen. प्रोटीन ER के ल्यूमन में एंटर करता है. प्रोटीन्स इनिशियली अनफोल्डेड है और उसमें कई सारे सिस्टीन रेसिड्यूज हैं जो कि प्रोटीन फोल्डिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं या डाइसल्फाइड बॉन्ड फॉर्मेशन पार्टिसिपेट कर सकते हैं. डाइसल्फाइड बॉन्ड फॉर्मेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्रोटीन डाइसल्फाइड आइसोमरेज PDI. प्रोटीन डाइसल्फाइड आइसोमरेज क्या करता है, खुद के डाइसल्फाइड बॉन्ड, इसके खुद के पास जो डाइसल्फाइड बॉन्ड्स हैं उनको वो रिड्यूस करता है और दैट इज खुद के अंदर जो डाइसल्फाइड बॉन्ड्स हैं उनको उसने ब्रेक डाउन किया, ऐसे वह रिड्यूस स्टेट में आ गए. उस दौरान जो अनफोल्डेड प्रोटीन है उसके अंदर इसने ऑक्सीडेशन करा दिया. ऑक्सीडेशन कराने का मतलब है डाइसल्फाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन करा दिया. सो प्रोटीन डाइसल्फाइड आइसोमरेज में डाइसल्फाइड बॉन्ड ब्रेक हो गए हैं लेकिन नए डाइसल्फाइड बॉन्ड प्रोटीन में करेक्ट जगह पर फॉर्म हो गए. दैट इज डन बाय एंजाइम प्रोटीन डाइसल्फाइड आइसोमरेज. प्रोटीन डाइसल्फाइड आइसोमरेज के डाइसल्फाइड बॉन्ड जो रिड्यूस स्टेट है उसको वापस, उसकी रिड्यूस स्टेट को वापस ऑक्सीडाइज स्टेट में कन्वर्ट करने का काम करता है एक एसोसिएटेड प्रोटीन ER रेजिडेंट प्रोटीन रेफर टू एज ERO1 जो कि अपनी ऑक्सीडाइज स्टेट से स्टेट में खुद रिड्यूस स्टेट में आ जाता है और उस बैकग्राउंड में एक और मशीनरी ऑक्सीजन टू H2O2 वाली काम करती है. सो डाइसल्फाइड बॉन्ड नहीं बन रहे थे तो बनने में मदद की प्रोटीन डाइसल्फाइड आइसोमरेज ने. कोई मिसफोल्डेड प्रोटीन है यानी गलत जगहों पर डाइसल्फाइड बॉन्ड बन गए, जहां पर बनने चाहिए उससे गलत जगहों पर, दीज आर रॉन्ग प्लेसेस जहां पर डाइसल्फाइड बॉन्ड बन गए, तो अभी प्रोटीन डाइसल्फाइड आइसोमरेज काम कर सकता है. उसके लिए जो प्रोटीन डाइसल्फाइड आइसोमरेज है पहले रिड्यूस स्टेट वाला इस्तेमाल होगा. वह इस डाइसल्फाइड बॉन्ड के ऊपर तो अटैक करेगा और खुद के साथ एक डाइसल्फाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन करा देगा यानी ट्रांजिएंट इंटरमीडिएट डाइसल्फाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा. फर्दर अगली स्टेज में खुद वापस रिड्यूस स्टेट में आ जाएगा और खुद जब रिड्यूस स्टेट में आया तो उस दौरान प्रोटीन को करेक्ट फोल्ड किया जा सकता है. सो यू कैन राइट डाउन अ सिंपल लाइन दैट प्रोटीन डाइसल्फाइड आइसोमरेज व्हिच इज वर्किंग इन रफ ER, it assists in formation of disulfide bonds in unfolded protein so that protein can fold correctly.
And if protein is misfolded, then protein disulfide isomerase can break disulfide bonds from incorrect position and allow formation of disulfide bonds at correct positions. So this is the functions of protein disulfide isomerase. Then moving to second important protein which assists in a protein folding is peptidyl prolyl cis trans isomerase. Peptidyl prolyl cis trans isomerase, what it do as its name suggests कि हमें पता है किसी अमीनो एसिड के साथ प्रोलीन can form a trans bond, that is C double bond O is on this side and NH is on this side, or you can say that the R chain of two amino acids, they resides in a opposite side, or it can convert it into a cis state that such that C double bond O group and NH group or R chain group, they are on the same side. Such state would be referred to as cis state. So sometime a protein, if it is forming a cis peptide bond, it may introduces a twist at inappropriate position. तो वहां पर PPI या peptidyl PPIs, that is peptidyl prolyl isomerase या cis trans isomerase, would convert a cis bond to trans bond, and at some places a twist is required, then the trans peptide bond would be converted to a cis peptide bond. So trans form a linear structure while cis introduces a bent. So according to requirement for protein folding, this enzyme can convert a trans bond to a cis bond and cis bond to trans bond. Most of amino acids, as we already mentioned, the peptide bonds in most of the amino acids, this is in a trans state. But if it is an amino acid, proline, then on this side, amino terminal side, the bond could be cis or trans. On this side, it would be again trans. Then another category of important protein which assist protein folding are referred to as molecular chaperones. Most of the molecular chaperones, they belong to a family of heat shock proteins. Most common molecular chaperones which work are referred to as heat shock proteins 70 or HSP 70. These HSP 70,
are present in cytosol, ER, mitochondria, chloroplast, even they are present at nucleus or bacterial cytosol. So, example in bacteria, bacterial cytosol is DNA K. And these chaperones which belongs to a HSP70, they may need a co-chaperone, which is most often belonging to an HSP40. HSP40 is co-chaperone. In bacteria, this HSP40 is referred to as DNA J. This co-chaperone, it has a ATPase activation function. And another protein which may be required is referred to as nucleotide exchange factor. And the role of nucleotide exchange factor in bacteria is, let's say, is performed by group E, GRPE. So what happens is that when a unfolded protein, let's say this is an HSP70 which is in ATP bound form and bound to an unfolded protein, but the affinity for unfolded protein is very loose. Often the unfolded protein or even folded protein, it may be released from HSP70. That is, in ATP bound form, the affinity is very low. But a co-chaperone, for example DNA J, it activates an ATPase activity of HSP70, due to which HSP70 from ATP state it moves to an ADP state. And once an HSP is in ADP state, affinity for unfolded protein increases. Affinity for unfolded protein. That is, most of HSP70, when they are bound with an unfolded protein tightly, they are in ADP bound form, keeping the protein in unfolded state. Whenever there is an appropriate time कि अब प्रोटीन को फोल्ड होना चाहिए, तो HSP70 वहां से हट जाता है. पर HSP70 को वहां से हटने के लिए HSP70 की प्रोटीन के लिए एफिनिटी कम होनी चाहिए. तो एफिनिटी कम करने का काम करता है कोई न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर. वह क्या करता है, इसके साथ जो ADP है उसको वापस, इसके साथ जो ADP है उसको वापस रिप्लेस कराकर कन्वर्ट करा देता है ATP के अंदर. सो इट टेक्स एंड इट इज अ न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर जो ADP को ले लेता है और ATP को देता है. और ऐसा होते ही वापस देयर इज सम काइंड ऑफ जो हाइड्रोफोबिक पॉकेट है ग्रुप E का, वो ओपन अप हो, जो हाइड्रोफोबिक पॉकेट है HSP70 का, वो ओपन अप हो जाता है, जिससे पेप्टाइड रिलीज हो जाता है. इस हाइड्रोफोबिक पॉकेट को वापस R चेन को ऐसे कवर कराने के लिए जो HSP70 है उसकी ATPase एक्टिविटी ऑन होनी चाहिए. और ATPase एक्टिविटी ऑन करने का काम कौन करा रहा है, DNA J. दैट इज दीज HSP70 दे वर्क इन अ ATP dependent manner. In ATP bound form, they have a low affinity for a unfolded protein, but once an ATPase activity of HSP70 is activated by some co-chaperones belonging to an HSP40, for example DNA J, the affinity of HSP70 for unfolded protein increases, and now the HSP70 keep this unfolded protein in that state only.
लेकिन जब प्रोटीन को फोल्ड होना होता है तो HSP70 यहां से हट जाना चाहिए। हटने के लिए HSP70 जैसे डीएनए के साथ जो ATP जुड़ा है उसको हटा, ADP को हटा दिया जाए, वापस ATP को लगा दिया जाए। ये काम करता है कोई न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर। बैक्टीरिया में न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर का काम करता है GRPE प्रोटीन। ऐसा होते ही एफिनिटी अब प्रोटीन के लिए कम हो जाएगी और प्रोटीन, अनफोल्डेड प्रोटीन है वह चैपेरॉन से हट सकता है, HSP70 से हट सकता है। So first category of molecular chaperones are heat shock proteins belonging to HSP70 which needs a co-chaperones which belongs to an HSP40. Another chaperones are trigger factors. These trigger factors, they have been identified in a prokaryotic system. They are prokaryotic proteins and associated with the ribosome. जैसे ही राइबोसोम से कोई प्रोटीन निकला, हो सकता है प्रोटीन सीधा फोल्ड होना शुरू हो जाए। नेसेंट प्रोटीन जैसे ही बाहर आया हो, प्रोटीन फोल्ड होना शुरू हो सकता है। लेकिन ट्रिगर फैक्टर, जैसे ही प्रोटीन आया, ट्रिगर फैक्टर इसके साथ आकर बाइंड हो जाता है और ट्रिगर फैक्टर प्रोटीन को, ट्रिगर फैक्टर कीप द प्रोटीन in unfold state until complete protein has been synthesized and released from राइबोसोम। जब तक पूरा प्रोटीन राइबोसोम से रिलीज ना हो जाए तब तक ट्रिगर फैक्टर प्रोटीन को होल्ड करके रखता है और अनफोल्ड करके भी रखता है। डू नॉट अलाउ, सो इट हैज अ ट्रिगर फैक्टर हैज अ होल्डेज एक्टिविटी एज वेल एज ट्रिगर फैक्टर इज हैविंग एन अनफोल्डेज एक्टिविटी। एक बार पूरा प्रोटीन सिंथेसाइज हो गया, फिर प्रोटीन फोल्डिंग को अलाउ किया जा सकता है। देन अनदर कैटेगरी ऑफ प्रोटीन जो प्रोटीन फोल्डिंग में असिस्ट करते हैं, दीज आर चैपेरोनिन्स। चैपेरोनिन्स, दे मेनली बिलोंग टू एन HSP60 family and there are two different type of chaperonins. Group 1 chaperonins. Group 1 chaperonins, they are present in eubacteria, that is normal bacteria, mitochondria and chloroplast. While group 2 chaperonins, they are present mainly in archaebacteria and eukaryota. In case of group 1 chaperonins, the HSP60 protein is arranged in two tiers. There are 7 subunits, 7 more subunits. So there are total 14 subunits arranged in. There are 14 units arranged in 2 rings. इन HSP60 प्रोटीन को ई कोलाई में ग्रो EL कहा जाता है, जो ड्रम लाइक स्ट्रक्चर बनाता है जिसमें देयर आर 2 रिंग्स। और क्लोरोप्लास्ट में, क्लोरोप्लास्ट CPN60 परफॉर्म द सेम फंक्शन। HSP60 को ऊपर कवर करने के लिए इस तरीके से कैप लाइक स्ट्रक्चर जो उसको कवर करेगा, दैट रोल इज प्लेड बाय HSP10 प्रोटीन। जैसे HSP70 को साथ काम करने के लिए HSP हमने कहा 40 चाहिए, इसी तरीके से HSP60 को काम करने के लिए HSP10 चाहिए। द रोल ऑफ HSP10 इन ई कोलाई इज परफॉर्म्ड बाय GRO-ES, while in case of chloroplast it is a chloroplast protein of 10 kilodalton CPN10. So GRO-EL, GRO-ES system in bacteria.
you say that it is a GRO EL, GRO ES system in E. coli. While chloroplast protein 60, chloroplast protein 10 in a chloroplast. Similarly, there are mitochondrial proteins. Group 2 chaperonins, which also form a drum-like structure where unfolded protein enters and it gets into a folded state. The role of HSP60 is performed by TRIC, TRIC or CCT proteins. Only the major difference is that there is an octameric symmetry, जबकि यहाँ पर heptameric symmetry थी. That is, there are 8 subunits arranged in 2 different rows. How? So there were 2 heptamer symmetry. How this function? To understand this, we can take an example of group 2 chaperonin reaction cycle. So this is a chaperonin mainly in a ATP bound form. There is some apical protrusion from where an unfolded substrate enters. So this is unfolded protein which is entering into it. Once an unfolded protein enters into this TRIC machinery, the ATP is hydrolyzed, inorganic phosphate released, now it comes a ADP form. Definitely due to which there is some kind of conformational change, and due to this conformational change there is protein folds. Once a protein fold, due to conformational change, ADP is expelled, ADP is released. Once ADP is released, again there is a conformation change, and due to this conformal change, now folded protein is being released. And once a folded protein has been released, again there is a conformal change which leads to an again binding of an ATP, and if ATP again binds, the apical protrusion is ready to take another unfolded protein. So this again, the second cycle will start. So in short, हम तो यहाँ पर इतनी सी बात लिख सकते हैं कि chaperonins, they are drum-like structure which works in a ATP dependent manner. A unfolded protein enters into it. Within this chaperonin, a favorable environment for protein folding is created, which is devoid of water, so that protein can easily fold. And when ATP is hydrolyzed into an ADP, protein get fold, and folded protein is released from this chaperonin. So this is a chaperonin reaction cycle. So HSP60, which works in association with HSP10. Then another HSP90, another chaperone is HSP90 protein, that is protein of 90 kilodalton. They are homodimeric proteins, also function in ATP dependent manner, mainly seen in eukaryotic proteins. They basically facilitate the later stages of a protein folding, especially of those proteins which are involved in signaling. So you will find that there are some, let's say these are estrogen receptors. This is the nucleus where these, so let's say these are estrogen receptors where a estrogen will bind to it.
This is estrogen receptors. This is the nucleus where there are the genes, and this is, let's say, a cell. And these are genes, that is estrogen response genes. But estrogen response genes, they will not express until there is an estrogen. This is estrogen receptor. So there is no expression of the genes. And this estrogen receptor, they are kept in their inactive state by a protein, a dimeric protein, homodimeric protein is HSP90. So these proteins, they are kept in the state that proteins will not move to the nucleus. They are not in their final state. But once a estrogen is there in a surrounding, अगर surrounding में कहीं पर estrogen है, if you can say that this is, let's say this is an estrogen somewhere, if estrogen is there, estrogen is non-polar signaling molecule, it can enter into the cell, and this estrogen can bind to estrogen receptor, and binding of estrogen to an estrogen receptor brings a conformational change. So estrogen receptors के ऊपर जैसे ही एस्ट्रोजन आकर बाइंड हुआ, कुछ कन्फॉर्मेशनल चेंज हुआ, न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल दिखना शुरू हो गया, और ये प्रोटीन अब न्यूक्लियस में चले गए, और न्यूक्लियस में जाकर टारगेट जीन्स के ऊपर जाकर बाइंड हो गए, और टारगेट जीन्स के ऊपर जैसे ही जाकर बाइंड हुए, टारगेट जीन का एक्सप्रेशन होना शुरू हो गया। उस दौरान अब यहाँ से एस्ट्रोजन बाइंड हुआ, उस दौरान यहाँ से अब देयर इज रिलीज ऑफ HSP90। HSP90 है, यहाँ से डिसोशिएट हो गए। सो जब तक एस्ट्रोजन नहीं है तब तक एस्ट्रोजन रिसेप्टर के ऊपर HSP90 बाउंड है, पर एक बार एस्ट्रोजन रिसेप्टर बाइंड हुआ, HSP90 हट गए, प्रोटीन अपनी फंक्शनल स्टेट में फोल्ड हुआ, उसका कोई न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल दिखना शुरू हो गया, प्रोटीन न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स से न्यूक्लियस के अंदर चला गया, और प्रोटीन न्यूक्लियस में जाकर टारगेट जीन्स का अब एक्सप्रेशन होना शुरू हो गया। यहां पर HSP90 का रोल सिर्फ इतना सा है कि जो लेटर स्टेजेस है, जो फंक्शनल स्टेट है प्रोटीन की, उस स्पेशली सिग्नलिंग में इन्वॉल्व प्रोटीन की, उनको रेगुलेट करने का काम कर रहा है। देन अनदर chaperone is nucleoplasmin. Nucleoplasmin is decameric, means composed of 10 subunits. Acidic protein present in a nucleus, so it is a decameric acidic nuclear protein, which is required for proper assembly of nucleosome. So only write this one line, nucleoplasm में there are important protein referred to as nucleoplasmin, which is a decameric acidic protein, which help in the assembly of nucleosome. So H3 and H4, they binds to the DNA. H2A, H2B dimers, they interact with the nucleoplasmin, and then nucleoplasmin transfer these subunits from this site to the nucleosome, so that a octameric nucleosome structure would be formed that you will study in detail in molecular biology. पर यहाँ तो इतना बहुत है, न्यूक्लियोप्लाज्मिन भी एक चैपेरोन जो न्यूक्लियोसोम्स के स्ट्रक्चर के फॉर्मेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देन there are some diseases
which are related to failure in प्रॉपर फोल्डिंग ऑफ प्रोटीन्स, जिनको हम कन्फॉर्मेशनल डिजीजेस भी कह सकते हैं, कन्फॉर्मेशन डिपेंडेंट डिजीज भी कह सकते हैं. मेनली दीज डिजीजेस आर ड्यू टू आइदर एन accumulation of aggregated proteins referred to as amyloid proteins, or due to prions. Due to a misfolding of protein, one of the diseases is referred to as Alzheimer's disease. In Alzheimer's disease, which is a neurodegenerative disease, beta amyloid plaques, they get aggregate, misfolded proteins, they aggregate. Parkinson disease is mainly again a neurodegenerative disease, affect mainly neurons producing dopamine or L-dopa, dopamine or L-dopa are affected. Mainly there is misfolding of alpha synuclein protein, which forms again amyloid plaques, aggregates. In general, the term amyloidosis could be utilized for series of diseases which are due to the accumulation of mutant proteins in important organs like heart, liver or kidney. Even the disease due to a prions is a protein infectious particle or prions. Some of well-known disorders which is due to a misfolding of protein, which is basically due to prions, commonly referred to as transmissible because it is infectious. Spongiform encephalopathies. So it is a name given to a family of infectious neurodegenerative diseases. Some of the example of this include bovine spongiform encephalopathy. It is occurring in bovine or cow, also referred to as mad cow disease. And similar disease in human is referred to as Creutzfeldt-Jakob disease or CZD in humans. So these are some of the diseases which are related with the problems in protein folding, that is Alzheimer, Parkinson disease, and transmissible spongiform encephalopathy, example mad cow disease, also referred to as bovine spongiform encephalopathy, and CJD, that is Creutzfeldt-Jakob disease. Almost similar disease seen in African tribes is referred to as Kuru disease. Okay, so this is due to the protein as a infectious particle. So these are the important points about the protein folding, that how protein folds, what are the thermodynamical aspects behind protein folding, और उसके साथ साथ
हमने डिस्कस किया कई सारे प्रोटीन्स जो कि असिस्ट करते हैं प्रोटीन फोल्डिंग. कमिंग टू द फैक्टर्स विच स्टेबलाइज द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन. The important factors which keep the protein in the stable 3D structures may include disulfide bonds. So disulfide bonds is an example of covalent bond. These kind of interaction, first, they are rare, mostly in secretory proteins. So इसका मतलब ये हुआ कि ज्यादातर प्रोटीन्स में डाइसल्फाइड बॉन्ड का रोल नहीं है प्रोटीन फोल्डिंग में, क्योंकि ज्यादातर जगहों पर डाइसल्फाइड बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होते. अनदर फैक्टर जो प्रोटीन को स्टेबलाइज करके रख सकता है, that could be a hydrogen bonds between a, let's say there is some R chain which is having, let's say, an acidic group, that could be aspartic acid and glutamic acid. On another side there could be amino acid like serine. Okay, there may be donor and acceptor, but again they play important role in secondary structure. टर्शियरी स्ट्रक्चर में लेसर रोल है, बिकॉज वेरी फ्यू आर चेन्स कैन पार्टिसिपेट इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग. क्योंकि ज्यादातर अमीनो एसिड्स में आर चेन नॉन पोलर होती है या इस तरीके की होती है कि वहां हाइड्रोजन डोनर और एक्सेप्टर ग्रुप नहीं होता. थर्ड, कुड बी एन आयनिक बॉन्ड्स और कुड आल्सो बी रेफर्ड टू एज सॉल्ट ब्रिज. बट अगेन मोस्ट ऑफ टाइम आर रिपल्सिव, thus destabilize protein. May be attractive, especially in thermostable proteins, and can be significant. तो फिर वह स्टेबिलिटी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकते हैं. तो फिर मेजर इंटरेक्शन कौन रोल प्ले करता है, हमने ये बात कर लिया, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस. हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस, दे आर मेजर स्टेबलाइजिंग interaction for a folded protein, and that's why we say that protein folding is a hydrophoby driven process. Van der Waal could also be kept. Van der Waals, they are weak, but numerous interactions can give or can provide significant stability. So in other words, most of times the stability is conferred by non-covalent bonds. Disulfide bonds, they are very rare. Most of times the stability is conferred by non-covalent bonds like hydrogen bond, ionic bond, that is salt bridge, hydrophobic interactions, and
a van der Waals interactions. And out of this, the major role is played by these van der Waals and hydrophobic interactions. These are the major stabilizing interactions. So the interactions which are kept on this side, they are playing a major role. They are playing a major role. And on this side, they are playing a minor role. So minor role is played by them. So the stability of protein could be by taking in changes in the absorbance on this axis as protein will unfold, especially the 280 nm wavelength would be more absorbed because tryptophan will get exposed, or aromatic amino acid they will get exposed. The temperature where 50% of protein get denatured is referred to as Tm. So protein will 50% denaturate at 30 degrees centigrade, or whether it will denaturate at 40 degrees centigrade, or even at a higher temperature than this, depends upon the number of these non-covalent interactions as well as the surrounding environment. For example, thermostable proteins which do not denaturate even at high temperature have a high incidence of salt bridge, or we can say electrostatic interaction, or we can say salt ionic bonds. तो इसके कॉन्ट्रास्ट, अगर थर्मोलेबाइल होते, यानी जो प्रोटीन्स कोल्ड डीनेचुरेट होते हैं, they have an high incidence of hydrophobic interaction, while majority of the proteins जो इंटरमीडिएट कंडीशन तक स्टेबल रहते हैं उनमें हाइड्रोफोबिक भी रोल प्ले कर रहे हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड भी, इलेक्ट्रोस्टैटिक भी, बाकी इंटरेक्शंस भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं. अदर कंडीशंस जो डीनेचुरेशन को प्रमोट कर सकती है, दीज इंक्लूड पीएच वेरिएशंस. सराउंडिंग में पीएच को वेरी किया तो आयनाइजेशन में चेंज आएगा, क्योंकि हमने पढ़ा है कि व्हेन pH is equal to pi there would net charge is 0. pH is lesser पॉजिटिव चार्ज आ सकता है, pH is higher नेगेटिव चार्ज आ सकता है, और चार्ज में चेंज आया तो कन्फॉर्मेशन चेंज होगा. तो pH वेरिएशन. वेरियस डिटर्जेंट्स स्पेशली फॉर एग्जांपल सोडियम डोडिकल सल्फेट के अंदर जो नॉन पोलर चेन होती है that mainly interact with a non-polar residues and do not allow these non-polar residues to aggregate together. हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन अब नहीं काम कर पाएंगे. हाई कंसंट्रेशन ऑफ वाटर soluble organic substances such as acetone etc. they interfere with the hydrophobic forces. They also leads to a denaturation.
So these are some of the factors which are stabilizing the 3D structure of protein and some other conditions which can destabilize proteins. Friends, in this session, we are basically going to focus that what are the important steps which we have to take for working with protein. So my dear friend, जब हम प्रोटीन बायोकेमिस्ट्री के ऊपर काम कर रहे हैं तो जो पहला स्टेप होता है दैट इज अ प्रोटीन आइसोलेशन. प्रोटीन जो हमें आइसोलेट कर सॉल्यूशन वाली फॉर्म में हमें ऑब्टेन करना पड़ता है. सो प्रोटीन हैज टू बी obtained in soluble form after removal from other cellular molecules. And the concentration of the protein which you want to obtain may vary very much. For example, if you are isolating a hemoglobin, the amount of hemoglobin in RBC is very high. Well, suppose if you want to isolate a lac repressor which regulates the lac operon, the concentration of lac repressor is negligible. You have to utilize almost same protocol to isolate a protein whether the concentration of protein is very high or a concentration of protein is very low, because aim is to obtain that particular protein in its purest form. So protein which is to be isolated, their concentration may vary. The protein may be present in very high amount or the amount of protein may be too low. So the for protein isolation, first step which is very important or crucial is the selection of protein source. That is from where you are going to obtain a protein. You must have a sufficient quantity of tissues from which protein to be isolated. That is, जिससे आप प्रोटीन आइसोलेट करने वाले टिश्यू से, ऑब्वियसली आपको उस टिश्यू को चूज करना चाहिए जिसकी अवेलेबिलिटी आसान. फॉर एग्जांपल मसल्स, फॉर एग्जांपल लीवर और किडनी, दीज काइंड ऑफ टिश्यूज दे मस्ट बी प्रेफर्ड. एक तो टिश्यू खुद की अवेलेबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए और दूसरा उस टिश्यू में जिस डिजायर्ड प्रोटीन को हमें ऑब्टेन करना है उसकी कंसंट्रेशन भी ज्यादा होनी चाहिए. सो फर्स्ट you focus on that tissue whose we can say isolation is comparatively easier and that particular tissue is available in comparatively more amount. And second, in that tissue the desired protein must also be there. So sufficient quantities of tissues from which the protein has to be isolated must be available to you, and the amount of chosen protein in that tissue, that should be also sufficiently high so that we can isolate that protein from that particular tissue. Must be high so that you can get that particular protein from that particular tissue. Most of time the tissues selected for
protein isolation is from domestic animals. ज्यादातर समय प्रोटीन आइसोलेशन के लिए जो टिश्यूज इस्तेमाल किए जाते हैं दे आर फ्रॉम सम डोमेस्टिक एनिमल्स, कुछ पालतू जानवर, जैसे कि फ्रॉम यू कैन ऑब्टेन इट फ्रॉम डॉग और फ्रॉम कैट और फ्रॉम रैट और even you can add from cow, bovine, etc. These are, we can say, some of the preferred sources from where you can obtain a tissue comparatively in bulk amount. If you are working on some microbial proteins, then the best choice is to obtain it from E. coli. E. coli, they could be maintained comparatively in abundant amount under culture condition. Or even if you are working on some protein which is to be obtained from a simple eukaryotic system, then you can choose the Baker's yeast, also referred to as Saccharomyces cerevisiae. So these are the sources from where we can obtain a protein. Even now we have developed some molecular cloning methods by which we can allow an expression of protein in heterologous system. कहने का मतलब ये है कि लेट्स से वी हैव टू वर्क on a human albumin protein. So instead of obtaining it from a human, we can insert that particular gene into some host cell. For example, yeast के अंदर उस जीन को इंट्रोड्यूस कर दिया और देन yeast के अंदर उस जीन का एक्सप्रेशन कराया, so that yeast start producing a human protein in comparatively abundant amount. और फिर हम उस ह्यूमन प्रोटीन के ऊपर काम करते हैं. Then another crucial aspect is the method of solubilization. That is how you are going to obtain this protein in a soluble state from a cell. Means you have to isolate the protein from the cell. That could be a plant, fungal or animal cell. If you are working with a blood serum protein, there is an advantage there that they are already in soluble state. So no much separate protocol or procedure has to be followed. जैसे बोवाइन सीरम एल्बुमिन के ऊपर काम कर रहे हो, ह्यूमन सीरम एल्बुमिन पर काम कर रहे हो या एंटीबॉडीज के ऊपर काम कर रहे हो, तो आपको किसी टिश्यू को होमोजेनाइज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रोटीन पहले से ही ब्लड के अंदर सॉल्युबल फॉर्म में अवेलेबल है. बट इफ यू हैव टू ऑब्टेन सम प्रोटीन फ्रॉम अ सेल, फॉर एग्जांपल फ्रॉम मोस्ट ऑफ द एनिमल सेल्स, व्हाट यू कैन डू इज can carry out an osmotic lysis. जो सेल है उसको आप हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखें. यू कीप द सेल इन हाइपोटोनिक solution. Result of this, that a water will enter into the cell, जिसकी वजह से सेल बर्स्ट हो जाएगा और उसके सारे कंटेंट रिलीज होकर
जो हमारा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है उसके अंदर आ जाएंगे। इफ देयर इज अ सेल वॉल, फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया, तो यू कैन यूटिलाइज एन एंजाइम लाइसोजाइम। और प्लांट सेल्स के लिए आप सेलुलेज, हेमी सेलुलेज का इस्तेमाल कर सकते हैं, पैक्टिनेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। फंगल सेल से ऑब्टेन करना चाहते हैं तो पहले काइटिनेज का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो यूटिलाइज अ डिटर्जेंट and some other kind of organic solvents if a protein has to be separated from specific organelle. The protein has to be separated from a specific organelle. तो डिटर्जेंट्स या ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, ताकि जो ऑर्गेनेल की मेम्ब्रेन है उसको सॉल्युबलाइज किया जा सके और उसे प्रोटीन को ऑब्टेन किया जा सके। फॉर लाइसिंग और ब्रेकिंग द सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन, यू कैन ऑल्सो यूटिलाइज और टेक यूज ऑफ होमोजिनाइजर। क्रशिंग करने के लिए होमोजिनाइजर का इस्तेमाल कर सकते हैं, या इवन सोनिकेटर इस्तेमाल किया जा सकता है। सोनिक वेव्स प्रोड्यूस कर सेल्स को रप्चर, मेम्ब्रेन को रप्चर कराया जा सकता है। जो कुछ भी होमोजिनेट आया है दैट मे हैव वेरियस फ्रैक्शंस डिराइव्ड फ्रॉम ईआर, गोल्गी, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, सभी जगह से एक ही साथ होगा। अगर आपको किसी ऑर्गेनल स्पेसिफिक प्रोटीन चाहिए तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ट्रीटमेंट देने के बाद नेक्स्ट स्टेप में व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू गो फॉर अ डिफरेंशियल सेंट्रिफिकेशन। डिफरेंशियल सेंट्रिफिकेशन में व्हाट यू डू इज you carry out a velocity gradient and organelles are separated according to साइज। जो सबसे बड़े साइज वाले उनको पहले सेपरेट किया जाता है, लो सेंट्रीफ्यूगेशनल फोर्स पर ही उनको सेपरेट किया जा सकता है। So this is referred to as method of solubilization that depends। आप सीधा ब्लड सीरम प्रोटीन के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। एनिमल सेल्स के लिए आप ऑस्मोटिक लाइसिस कर सकते हैं। प्लांट बैक्टीरियल सेल के लिए पहले कुछ एंजाइमेटिक ट्रीटमेंट देने के बाद फिर होमोजिनाइजर या सोनिकेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर होमोजिनेट में से एक पर्टिकुलर ऑर्गेनेल से प्रोटीन को आइसोलेट करना है तो आप डिफरेंशियल, यानी पहले 5000 आरपीएम पर रोटेट कर प्रेसिपिटेट बना लो, फिर 10,000 आरपीएम पर और रोटेट करो, और इस तरीके से डिफरेंट जो फ्रैक्शन सेडिमेंट हो रहे हैं उनको अलग अलग ट्यूब्स में कलेक्ट करो और वहां से फिर प्रोटीन को आइसोलेट किया जा सकता है। देन जो भी प्रोटीन आइसोलेट हुआ है, इट इज नेसेसरी that that protein should remain in a stable form. Most often the all isolation protocol in which a protein is isolated contains some kind of buffer। जो होमोजिनाइज कर रहे हैं वहां पर भी बफर होता है, फाइनली जहां पर प्रोटीन को हम आइसोलेट कर रहे हैं वहां पर भी कोई ना कोई बफर होता है। टेम्परेचर्स is to be maintained around 0 degrees centigrade or even below. Even in some cases, even it could be maintained around 100 minus 100 degrees centigrade, because low temperature stabilize proteins। ये अलग बात है, कल हम जस्ट डिस्कस भी, या आज ही हम डिस्कस कर रहे थे कोल्ड लेबाइल प्रोटीन्स के बारे में।
सो जो कोल्ड लेबल प्रोटीन्स है, फॉर दिस यू कंपैरेटिवली मेंटेन हाई टेम्परेचर। जो थर्मोस्टेबल प्रोटीन्स हैं उनके लिए भी यू कैन मेंटेन एन हाई टेम्परेचर एंड थर्मो लेबाइल प्रोटीन impurities can be removed। तो थर्मोस्टेबल में तो और भी आसान है, एक तो आपको टेम्परेचर लो करके नहीं रखना है, और दूसरा इवन आप 40 डिग्री सेंटीग्रेड भी मेंटेन करेंगे या 50 डिग्री सेंटीग्रेड भी मेंटेन करेंगे तो मोस्ट ऑफ द प्रोटीन्स जो थर्मोस्टेबल नहीं है दे विल गेट डीनेचुरेट, दे विल गेट प्रेसिपिटेट। इन अ सॉल्यूशन यू विल मेनली गेट अ थर्मोस्टेबल प्रोटीन। जब कभी भी किसी ऑर्गेनेल से या सेल से प्रोटीन को आइसोलेट करते हैं तो इट माइट बी अ केस दैट दैट प्रोटीन इज कमिंग डायरेक्टली इन कांटेक्ट ऑफ सम काइंड ऑफ प्रोटीज। प्रोटीएस काम ना करे इसलिए उसको इनहिबिट करके रखना जरूरी। एक तो उसके लिए टेम्परेचर या तो ज्यादा करके रखो ताकि प्रोटीएस काम ना करे, पीएच को हाई या लो करके रखो, उस तरीके का पीएच मेंटेन करके रखो विच इज नॉट फेवरेबल फॉर द एक्टिविटी ऑफ प्रोटीएस, और ऐड सम काइंड ऑफ इनहिबिटर जो प्रोटीएस की एक्टिविटी को इनहिबिट करता है। प्रोटीन्स दे कैन रैपिडली गेट denaturate if they come at air water interface। so प्रोटीन अगर एयर वाटर इंटरफेस पर आते हैं तो फ्रॉथिंग होती है, झाग टाइप बनते हैं, और उसकी वजह से प्रोटीन माइट गेट डीनेचर। सो स्लो वॉर्टेक्सिंग नहीं की जाती, तेजी से एजिटेशन नहीं किया जाता, मूवमेंट को कंट्रोल करके रखा जाता है ताकि फ्रॉथिंग को या प्रोटीन को एयर वाटर इंटरफेस पे आने के लिए या वायल या टेस्ट ट्यूब की वॉल के ऊपर स्टिक होने से रोका जा सके। उसके अलावा हो सकता है जो प्रोटीन आपने आइसोलेट किया दैट कुड बी अ फेवरेट फूड फॉर माइक्रोब्स, तो वह सॉल्यूशन जिसमें आपने प्रोटीन को आइसोलेट किया है दैट शुड ऑल्सो बी अ माइक्रोब फ्री। यू यूज सम काइंड ऑफ पॉइजन्स और टॉक्सिन्स जो माइक्रोब्स को किल करे, माइक्रोब्स को मल्टीप्लाई होने से रोके। फॉर एग्जाम्पल मोस्ट ऑफन यू यूटिलाइज सोडियम एजाइड। Azides they inhibit the complex 4 of electron transport chain and inhibit their growth, do not allow them to multiply, kill these microbes. Now you have selected some suitable source, from that suitable source you have isolated a protein, you have kept all those conditions which are essential for the stability of a protein, यानी आपने फ्रॉथिंग नहीं होने दी, प्रोटीज को काम करने से रोका, टेम्परेचर को लो करके रखा, बफर सॉल्यूशन में उस प्रोटीन को आपने आइसोलेट किया, वो सारी कंडीशंस मेंटेन करके रखी। नेक्स्ट स्टेप इज द एसे ऑफ अ प्रोटीन।
that is whether that particular protein is there in a mixture or not. उस मिक्सचर में वो प्रोटीन है या नहीं. मोस्ट कॉमन जो सेंसिटिव अप्रोचेज है, यानी बहुत लो अमाउंट में भी हो तो भी प्रोटीन को डिटेक्ट किया जा सकता है, आर द सम immunochemical techniques where we use antibodies. These we will study later on in detail, include ELISA and radioimmunoassays. So we can use some immunochemical technique which can readily detect small quantities of specific protein. In ELISA, what you do is, first you immobilize the antibody. This is the first antibody, and this first antibody, it has been immobilized on some kind of solid support. This is the antibody which is against the desired protein, जिसको हमें ऐसे करना है. So एक solid support है और उसके ऊपर antibody. आप इस तरीके से भी diagrammatic representation कर सकते हैं. These are the antibodies which are adsorbed, first antibodies. Then you add a sample which contain a desired protein. So there may be variety of proteins, there may be different kind of proteins, as well as a desired protein is also there. If desired protein is there, desired protein will bind to the antibody. Then a washing step is carried out, so unwanted जितने भी proteins है उनको remove किया जा सके. Then क्या डिजायर्ड प्रोटीन एंटीबॉडी के साथ बाइंड हुआ या नहीं हुआ, उसको पता करने के लिए हम एक सेकंड एंटीबॉडी इस्तेमाल करते हैं. वी यूज लेट्स से, उसको इस तरीके से ड्रॉ करें, वी आर यूजिंग अ सेकंड एंटीबॉडी एंड दिस सेकंड एंटीबॉडी इज टैग्ड विथ अ एंजाइम. उसके साथ हमने क्या ऐड कर रखा है, सेकंड एंटीबॉडी के साथ देयर इज एन एंजाइम. दिस इज द सेकंड antibody. So second antibody is covalently linked to some kind of enzyme. Second antibody also recognize the specific protein. So अगर specific protein present है तो जहां फर्स्ट प्राइमरी एंटीबॉडी भी बाइंड हुई वहां पर सेकंड एंटीबॉडी भी, जहां प्राइमरी एंटीबॉडी बाइंड हुई वहां पर सेकेंडरी एंटीबॉडी भी बाइंड होगी. और सेकेंडरी एंटीबॉडी के साथ क्या जुड़ा होगा, देयर वुड बी सम एंजाइम. सो फिर वॉशिंग स्टेप की ताकि एक्सेस सेकेंडरी एंटीबॉडीज को हटाया जा सके. अब सेकेंडरी एंटीबॉडी वहां पर बाइंड हुई या नहीं हुई, ये हम कैसे पता करें. तो सेकेंडरी एंटीबॉडी के साथ कोई एंजाइम ऐड किया हुआ है, उस एंजाइम का हम कलरलेस सबस्ट्रेट देते हैं. अगर एंजाइम है तो कलरलेस सबस्ट्रेट इज कन्वर्टेड इनटू अ सम काइंड ऑफ डिटेक्टेबल प्रोडक्ट, वह कलर्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो. सो अगर प्रोडक्ट कलर्ड प्रोडक्ट बन रहा है वहां पर, तो स्पेसिफिक प्रोटीन वहां पर सैंपल के अंदर प्रेजेंट है, उसको पता किया जा सकता है. जितना ज्यादा स्पेसिफिक प्रोटीन, जैसे यहां पर 2 जगहों पर बाइंड हुआ, जितना ज्यादा स्पेसिफिक प्रोटीन तो ये ज्यादा जगहों पर बाइंड होगा, और जितनी ज्यादा जगहों पर बाइंड होगा वहां सेकेंडरी एंटीबॉडी ज्यादा बाइंड होगी. सेकेंडरी एंटीबॉडी ज्यादा बाइंड होगी तो एंजाइम ज्यादा बाइंड होगा, और एंजाइम ज्यादा बाइंड होगा तो बहुत कम समय में
ज्यादा कलर डेवलपमेंट होगा। तो कलर कितना डेवलप हो रहा है उस बेसिस पर आप एक क्वांटिटी के बारे में भी आइडिया या इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हैं। तो ऐसे ऑफ प्रोटीन के लिए एलिजा या एलिजा से भी और ज्यादा सेंसिटिव अप्रोच रेडियो इम्यूनो ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं। यू कैन गो फॉर रिया। रेडियो इम्यूनो ऐसे के फर्स्ट स्टेप में व्हाट यू डू इज यू एड अ सम फिक्स्ड नंबर ऑफ एंटीबॉडी against specific protein. This green one is the specific protein. That is whether this specific protein is present in sample or not. The fixed number of antibodies they have been added. So if a specific protein is there, these finite or fixed number of antibodies they will bind to a specific protein. There may be some non-desirable protein as well. Unwanted proteins could और भी हो सकता है, but antibodies they will bind only to the specific protein. Now in a next step, what you do is you add a fixed amount of radio labeled antigen. So now there is a antigen from sample as well as now there is an radio labeled antigen. There would be competition between these two antigens. जो पहले से सैंपल में एंटीजन है वो एंटीबॉडी के साथ बाइंड होना शुरू करेगा। तो जो रेडियो लेबल्ड एंटीजन है वह भी एंटीबॉडी के साथ कंपीट कर बाइंड होने की कोशिश करेगा। अब एंटीबॉडी क्योंकि फिक्स अमाउंट में, इसलिए कितने परसेंट एंटीबॉडीज के साथ अनलेबल्ड एंटीजन बाइंड होगा, कितनी जगहों पर रेडियो लेबल्ड एंटीजन बाइंड होगा, वो इस बात पर डिपेंड करता है कि जो स्पेसिफिक प्रोटीन है सैंपल में उसकी कंसंट्रेशन कितनी। सैंपल में एंटीजन की कंसंट्रेशन जितनी कम होगी उतना ही ज्यादा जगहों पर रेडियो लेबल्ड एंटीजन को बाइंड होने का मौका मिलेगा। अगर सैंपल में एंटीजन ज्यादा है तो रेडियो लेबल्ड एंटीजन को बाइंड होने का कम मौका मिलेगा। सो यू कैन सी दैट देयर इज अ कंपटीशन। एट सम प्लेसेस रेडियो लेबल्ड एंटीजन इज बाउंड एंड एट सम अदर प्लेसेस देयर इज द बाइंडिंग ऑफ द एंटीजन which is present in the sample. So there is a kind of competition. Obviously whenever there is an antigen antibody interaction there is a formation of some kind of precipitate का formation हुआ। सुपरनेटेंट को यहां से हटाया जा सकता है, सुपरनेटेंट को हटाया जा सकता है। और जो हमारे पास पैलेट आई है उस पैलेट के अंदर कितनी रेडियो एक्टिविटी आ रही है, कितने रेडिएशंस आ रहे हैं, उसको डिटेक्ट किया जाएगा। रेडियो एक्टिविटी और जो प्रोटीन कंसंट्रेशन है उसके अंदर इनवर्स रिलेशनशिप होगा, क्योंकि अगर प्रोटीन की कंसंट्रेशन ज्यादा है
तो ज्यादातर जगहों पर अनलेबल्ड प्रोटीन ही बाइंड हो जाएगा, रेडियो लेबल्ड एंटीजन को बाइंड होने का मौका बहुत कम मिलेगा, और रेडियो लेबल्ड एंटीजन को बहुत कम मौका मिलेगा, तो रेडियो एक्टिविटी भी कम आएगी. सो हु वुड बी विनर इन competition? That depends upon the relative concentration of radio labeled antigen which we are adding from outside and unlabeled antigen which is present in the sample. जितनी सैंपल में प्रोटीन की कंसंट्रेशन कम है उतनी ही रेडियो एक्टिविटी ज्यादा मॉनिटर होगी. देन मूविंग टू नेक्स्ट. Now, a protein may be, you have isolated a protein, but protein could be a mixture which may have various undesirable protein as well. So, you have to go for a step-by-step protocol so as to isolate protein in its purest form. So, most often the proteins, they are purified by a fractionation procedures. Means you can go for different mechanisms. For example, first you can go for a salting out, then you can go for a gel permeation chromatography. यानी पहले हम हाइड्रोफोबिक की बेसिस पर इंप्योरिटीज को हटाएंगे, फिर हम जेल परमिएशन कर सकते हैं जहां पर हम साइज के बेसिस पर इंप्योरिटीज को हटाएंगे, फिर हम आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी कर सकते हैं, और आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में हम पीआई या चार्ज के बेसिस पर फिर एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी कर सकते हैं जहां पर हम मॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस के बेसिस पर प्रोटीन को ऑब्टेन कर सकते हैं. So these are different steps. Note down these. That is, you have to go some step by step fractionation procedures. There are various steps which separate or try to purify the protein on different criteria. For example, the techniques like salting in and salting out, they are based upon solubility, or more accurately we can say they are based on hydrophobicity. That is, what is the percentage of hydrophobic amino acid. You can utilize a fractionation techniques which is based upon the ionic charge. The important technique which are utilized and based on ionic charge you can note down include ion exchange chromatography, electrophoresis, and isoelectric focusing. These are the three जो टेक्निक्स हैं जो प्रोटीन्स को सेपरेट करती है ऑन बेसिस ऑफ आयनिक चार्ज, और इवन यू कैन से ऑन बेसिस ऑफ देयर आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट. आयनिक चार्ज या आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट के ऊपर टेक्निक्स जो काम करेगी, दैट इज आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड
Another form of electrophoresis referred to as isoelectric focusing. Then there are some techniques which are depend upon the polarity of proteins, and the techniques which are based upon polarity of protein, which separate the molecules on basis of the polarity of protein, that is whether a protein is non-polar or polar, or if there are three proteins, all three are polar, there would be some differences in a polarity. So techniques like adsorption chromatography, paper chromatography, reverse phase chromatography, and hydrophobic interaction chromatography. These are based on, or they separate the protein based on their polarity. Proteins को polarity के basis पर separate करती है चार टेक्निक. Then there are some techniques which separate the protein on basis of molecular size, or you can say on basis of the molecular weight. These include dialysis and ultracentrifugation, forms of gel electrophoresis like SDS, Page, and agarose gel electrophoresis, gel filtration chromatography, and ultra centrifugation. मॉलिक्यूलर साइज या मॉलिक्यूलर वेट के ऊपर बेस्ड. और हम जानते हैं कि मॉलिक्यूलर वेट के ऊपर डेंसिटी भी डिपेंड करती है, इसलिए वी कैन ऑल्सो से दैट दे आर डिपेंड अपॉन द डेंसिटी. There are some techniques which are based upon binding specificity, or we can say which is depend upon a variety of non-covalent molecular interaction, and the technique which is based upon, which is very specific and based upon non-covalent molecular interactions, include affinity chromatography. So these are some of the criteria or characteristics on basis of techniques, suitable techniques could be utilized. Now, the solubility of a protein means when you are trying to obtain a pure protein, a desirable protein would be soluble in a solution depends upon multiple factors. That is, whether a protein will remain suspended in a solution or whether it will precipitate in a solution. So, whether a protein would be in a soluble state or whether a protein would be in form of precipitate. That depends upon multiple factors. First, it depends upon the
concentration of dissolved salts. That is, it might be a case that low salt concentration protein is in a soluble state, and at higher salt concentration protein may get precipitate. It also depends upon the type of solvent, whether solvent is polar or solvent is non-polar. Some protein they get precipitate in non-polar solvent, while there are some other which may get precipitate in a polar solvent. It also depends upon the surrounding pH. That is, most often if pH is equivalent to isoelectric point, the solubility is very less, but pH is either greater or lesser than isoelectric point, the solubility is comparatively more. Another factor is the temperature. Cold labile proteins they get precipitate at low temperature, while heat labile proteins they get precipitate. High temperature means temperature may be another variable factors which will affect that whether the protein will be in a soluble state or whether it will form a pellet or precipitate. If we see the effect of salt concentration, what we find is that on this axis we are increasing the solubility, increasing the concentration of ammonium sulfate. So we are increasing the concentration of a salt, और कौन सी सॉल्ट की कंसंट्रेशन रेज कर रहे हैं, अमोनियम सल्फेट. On this axis there is a log of solubility. You can see that whether it is a fibrinogen protein, जैसे ही सॉल्ट की कंसंट्रेशन बढ़ाई solubility डिक्लाइन हुई है. हीमोग्लोबिन की, सूडोग्लोबुलिन की, सीरम एल्बुमिन की, मायोग्लोबिन की, that is at higher ionic strength, solubility of most of protein decreases. Some protein they can even precipitate like fibrinogen, जो fibrous protein है, they can precipitate even at low ionic strength. So there are some protein like myoglobin, they are precipitating at a very high ionic strength of salt. Same thing is explained by this diagram as well. You are increasing the ionic strength of different salts like NaCl, KCl, magnesium sulfate, ammonium sulfate, K2SO4, and here there is a logarithm of the solubility in salt divided by the solubility in water. So S is solubility in a salt and S dash is basically the solubility in water. You can see that it is not a universal fact that all salt affect the solubility of protein to same extent. You can see that the effect of NaCl on a solubility is negligible, while ammonium sulfate and K2SO4 even at very low ionic strength 1 से 2 के बीच में ही प्रोटीन को प्रेसिपिटेट करना शुरू कर देते. That is, salt like NaCl and KCl are not much efficient in salting out of protein, while salts like K2SO4 or ammonium sulfate can precipitate proteins very effectively. Another trend what you find is that initially in most of cases the solubility of a protein in a salt increases. So there is a salting in and later on there is a salting out.
So what you find is later on there is a salting out. Almost in most of cases you see that solubility again decreases. That is, at low salt concentration what you find is increases protein solubility, referred to as salting in. At high salt concentration of ammonium sulfate, K2SO4, etc., decreases protein solubility, that is carry out a salting out. So these are the conclusions which can be drawn. नोट डाउन करें इनको. So note down हो गया. Then moving further, we are again and again saying that at low ionic strength there is a salting in and there is a high ionic strength, there is salting out. What actually ionic strength means, or how you calculate an ionic strength? Ionic strength of a salt depend upon, first, Ci is concentration of ions and Zi is the charge of ions. That is, whatever the salt in a solution, it gets dissociated into the ions. For example, if you are having an NaCl as a salt, then formula would be, ionic strength would be half of summation of concentration of sodium ion, Z of sodium ion, plus concentration of chlorine ion, Z of chlorine ion. और Z का हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है, ताकि अगर नेगेटिव चार्ज भी हो तो स्क्वायर करने पर वो क्या हो जाए, पॉजिटिव. So this is the formula which is being utilized for calculation of ionic strength of salt. That is, for example, if we have to calculate the ionic strength of 0.1 molar NaCl, how we will calculate? So first we must know NaCl in a solution will dissociate into sodium ion and chlorine ion. This would be 0.1 molar, this would be also 0.1 molar. This is the concentration. Charge on sodium ion, you know, it is a +1 and charge on chlorine is -1. And the formula for ionic strength, I is equal to half of summation of concentration of sodium ion, Z of sodium ion square, plus concentration of chlorine ion, Z of chlorine ion square. That would be equal to half summation of concentration of sodium ion is 0.1, charge on sodium ion is up
plus 1 square plus concentration of chlorine ion is 0.1, Z of chlorine ion is minus 1 उसका square. That would be equivalent to half summation of 0.1 into 1 plus 0.1 minus 1 into minus 1 is again 1. That would be half of summation of 0.1 plus 0.1, that is half of summation of 0.2, that would be half into 0.2, that would be 0.1. So ionic molar strength is also 0.1 and the ionic strength is also 0.1. तो इस तरीके से ionic strength कैलकुलेट कर सकते हैं, but always ionic strength would be equivalent to molar strength. It is not essential. For example, ionic strength, calculate the ionic strength of 0.2 molar K2SO4. इसकी ionic strength को कैलकुलेट करो. तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हमें पता होना चाहिए इससे मिलने वाला क्या क्या है. It will give you twice of potassium ion and 1 sulfate ion. कंसंट्रेशन हमारे पास मिलेगी 0.2 into 2 because twice you are getting this. For this would be 0.2 into 1. Charge here it is plus 1 and charge here is minus 2. Formula would be I would be equivalent to half summation of concentration of potassium ion Z of potassium ion square plus concentration of sulfate ion Z of sulfate ion square. That would be equivalent to half of concentration of potassium ion is 0.2 into 2, that would be 0.4. Charge of this is plus 1 square. Concentration of sulfate ion is 0.2. Charge of this is minus 2 square. Half into 0.4 into 1, यहाँ पर सबमिशन साइन ही रख देते हैं, प्लस 0.2 and minus 2 multiplied by minus 2 square would be 4. Here you can see that half summation of 0.4 plus 0.8, that would be half of 8 plus 4 is 1.2, so you are getting a 0.6. So here the molar concentration is 0.2, but the ionic strength is thrice of this, is 3 times of this. So we can say that NaCl के कंपैरिजन में K2SO4 ज्यादा इफेक्टिव है आयनिक हाई आयनिक स्ट्रेंथ के सॉल्यूशन को बनाने के लिए. Now what we have already seen is that at low salt concentration, if you or at the low ionic strength, most of times at low ionic strength, at the low ionic strength,
at the low ionic strength, what you find is salting in, and at high ionic strength, what you find is salting out. At low salt concentration, most often the solubility increases. The reason is that low salt concentration, at low salt concentration, the ions form salt bridge with positive and negative charge of proteins, and thus increases interaction with water. वाटर के साथ इंटरेक्शंस को इंक्रीज करता है. सो लेट्स से कि यहाँ पर कोई माइनस चार्ज है, यहाँ पर कोई पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर कोई माइनस चार्ज है. इट वाज इंटरेक्टिंग विद अ प्रोटीन, पर यहाँ पर और कोई आयन, लेट्स से सोडियम आयन यहाँ पर आकर इंटरेक्ट करता है, या क्लोरीन आयन यहाँ पर आकर इंटरेक्ट करता है, वापस सोडियम आयन सपोज यहाँ पर आकर इंटरेक्ट करता है. ऐसा करने पर अब वाटर के साथ सॉल्युबिलिटी और ज्यादा एफिशिएंट देखने को मिलेगी. नाउ वाटर विल मोर एफिशिएंटली इंटरेक्ट विद दिस, और वाटर ज्यादा एफिशिएंटली इंटरेक्ट करेगा सोडियम आयन और क्लोरीन आयन की वजह से. तो यू विल सी दैट our solubility has been increased. This is what you find at low salt concentration. So even and at here we can also note down one more thing, उसको भी यहीं पर note down हम कर लेते हैं, that high salt concentration पर what you find is, as already mentioned, at high salt concentration what you find is salting out. ऐसा क्यों? That high salt concentration decreases effective concentration of solvent, that is water. क्योंकि ज्यादातर salt ion water के साथ इंटरेक्ट करना शुरू कर लेते हैं, and result is thus प्रोटीन प्रेसिपिटेट. इसलिए प्रोटीन प्रेसिपिटेट हो जाता है. लो सॉल्ट कंसंट्रेशन पर तो सॉल्ट्स वाटर के साथ इंटरेक्शन को बढ़ा रहे हैं, बट हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन पर बहुत ज्यादा आयंस होने पर वाटरी कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, और वाटरी कंसंट्रेशन कम हो जाएगी तो सॉल्युबिलिटी भी कम हो जाएगी. Then even what you find is कि किसी भी प्रोटीन है उसकी आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पर उसकी सेम प्रोटीन को किसी भी सॉल्ट कंसंट्रेशन पर रखें, 0.02 मोलार पर रखें, या 0.001 मोलार पर रखें, या 0.005 पर रखें, या 0.001 पर रखें. जैसे फॉर एग्जांपल वी हियर इन दिस डायग्राम वी आर कीपिंग इट इन beta lactoglobulin. Beta lactoglobulin, what you find is that minimum solubility of protein is at its isoelectric point. तो बीटा लैक्टोग्लोबुलिन प्रोटीन या एनी अदर प्रोटीन की अगर बात करें तो उसकी मिनिमम सॉल्युबिलिटी उसके आइसोलेटिक पॉइंट पर होगी. क्योंकि ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आइसोलेटिक पॉइंट पर नेट चार्ज 0 होगा, और नेट चार्ज अगर 0 है तो सॉल्युबिलिटी सबसे कम होगी. उससे आइसोलेटिक पॉइंट से लोअर साइड पर जाएं या हायर साइड पर जाएं, आप देखें सॉल्युबिलिटी है वह इंक्रीज होती है. सो solubility
increases on pH lower than isoelectric point or pH higher than isoelectric point, because if pH is equal to Pi, charge is 0. If pH is lesser than Pi, charge is positive, and if pH is greater than Pi, charge is negative. तो जब कभी चार्ज होगा उस दौरान सॉल्युबिलिटी ज्यादा देखने को मिलेगी. तो डिफरेंट सॉल्ट कंसंट्रेशन में कॉमन चीज देखने को मिलती है, दैट सॉल्युबिलिटी is minimum at its isoelectric point, and then if you move below isoelectric point or move away isoelectric point, the solubility increases. So salting out, it is observed at high salt concentration, and at high salt concentration the solvent's activity is decreased. Because as you increase the concentration of solute, the solvent concentration decline. As already mentioned, solute-solute interactions become more stronger than solute-solvent interaction and thus solute precipitate. So आयंस में इंटरेक्शंस, चाहे वो प्रोटीन और सॉल्ट हो या सॉल्ट के आयंस हो, इनमें इंटरेक्शन बहुत ज्यादा हो जाता है एज कंपेयर टू द आयंस एंड वाटर इंटरेक्शन, बिकॉज द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर और कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट इज वेरी लेस. The protein which can produce a very high ionic strength would be most effective in precipitating the protein or most effective in the salting out. So most commonly प्रोटीन को प्रेसिपिटेट करने के लिए जो सॉल्ट इस्तेमाल किया जाता है, दैट इज एन अमोनियम सल्फेट. दिस इज मोस्ट इफेक्टिव, इट इज वी कैन से वेरी इफेक्टिव इन सॉल्टिंग आउट. यानी लो कंसंट्रेशन पर भी अमोनियम सल्फेट पर सॉल्टिंग आउट कराई जा सकती है, एज कंपेयर टू इफ यू टेक अ KCl और सम मैग्नीशियम सल्फेट, यू हैव टू पुट अ वेरी हाई कंसंट्रेशन. Then ions like iodine, chlorate, HCl, lithium, magnesium, calcium, barium, these increases the solubility of proteins. Instead of salting out calcium ion, barium ion, etc., iodine, magnesium, these divalent cations, most often they increases the solubility. ये हॉफमिस्टर सीरीज के आयंस हैं और ऐसे आयंस जो प्रोटीन की सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज करते हैं, यानी प्रोटीन को इस तरीके से अनफोल्ड कर देंगे. So these ions they tend to denaturate the protein, often referred to as chaotropic agents. They increases the solubility and decreases. What they do is they increases solubility, decreases hydrophobic interactions, and thus leads to a denaturation of proteins. In contrast to this, ions like ammonium or potassium, these ions they decrease the solubility of proteins or even the sulfate ions. These decreases the solubility of protein, and जो प्रोटीन को की solubility को डिक्रीज करते हैं वह प्रोटीन को क्रिस्टलाइज करते हैं, और क्रिस्टलाइज करने के मतलब प्रोटीन को स्टेबलाइज करते हैं इन दैट नेटिव स्ट्रक्चर.
So ions like ammonium, potassium, or the sulfate ions, they decreases the solubility, means they are responsible mainly for salting out. जिन प्रोटीन को हम सॉल्टिंग आउट करते हैं, they are more stable, they are not in their denatured form. This was the effect of salt. If we talk about the effect of organic solvents, the organic solvents which has a low dielectric constant like acetone and ethanol, they act as a precipitant. वह प्रोटीन को प्रेसिपिटेट कराते हैं जिनका लो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है. तो ऐसे सॉल्वेंट जिनका हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, जैसे वाटर का खुद का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 80 है, उससे भी ज्यादा हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो या उसके कंपेरेबल हो, तो वह सॉल्वेंट की तरह काम करते हैं. दे हेल्प इन solubilization. Some of the important solvents include dimethyl sulfoxide, N-dimethyl formamide. They helps in solubilization of protein. Protein will more be in a supernatant instead of a precipitate. Even glycerol, it leads to hydration of proteins. So effective in solubilizing. So these keep protein in supernatant and they keep the protein in precipitate. Moving to the effect of pH, already we have mentioned that when pH is equal to Pi, charge is 0 and solubility is minimum. If pH is lesser than isotopic point, charge is positive, solubility is high. If pH is greater than isoelectric point, charge is negative, solubility is more. Different proteins, they have different isoelectric point, and if the pH is equivalent to isoelectric point, the solubility is minimum, and this is referred to as isoelectric precipitation. Different proteins, they have different isoelectric point. For example, egg albumin, oval albumin is around 4.6, or even serum albumin is also 4.9. While proteins like myoglobin has a isoelectric point around 7, while hen egg lysozyme is having a isoelectric point around 11. So different proteins, they have different isoelectric point, and their solubility is minimum when pH is equivalent to the isoelectric point. Proteins, if you have to go for an X-ray crystallography, then you have to go for crystallization. If you go for X-ray crystallography, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सॉल्टिंग आउट करना पड़ेगा, और सॉल्टिंग आउट कर प्रोटीन्स को उनकी स्टेबल नेटिव स्टेट में कन्वर्ट किया जा सकता है. So proteins, they could be crystallized and then they could be visualized using X-ray crystallography. So my dear friends, these are the important points related with the protein biochemistry or working with the proteins. Next
सेशन में वी आर गोइंग टू डिस्कस द डिफरेंट टेक्निक्स लाइक chromatography, electrophoresis, centrifugation, and so on. So once again, thanks. Do revise the things, चीजों को वापस आप रिवाइज करते रहें.